Sir, you are unmute right now, Ashwini sir. Abhishek, we are starting that. Start karo, Lakshmi. Okay. Yes. Good morning, everyone. So, due to some technical glitch, we were late through college. So, we are happy to invite the third webinar of History Department, Deshbandhu College. And we are thankful to our speaker and eminent historian, Professor Prabhu Mahapatra, sir, for accepting our invitation on speaking today on tracking history, tracing the past, thoughts on history as crafts. So thank you, sir. Now I request Anand to introduce our speaker. Anand is here. Yes, am I audible, sir? Yeah, Anand, please. Good morning, everyone present here. Origin, the History Society of Deshbandhu College feel extremely delighted at the presence of Professor Prabhu Mahapatra to present a talk on tracking history, tracing the past, thoughts on history as a craft. We welcome you, sir. Professor Mahapatra's academic career after PhD began with a fellowship at Nehru Memorial University and Library. He has had his postdoctoral appointments at Yale University 1993 to 94, the School of Oriental and African Studies, London 1994, and at the University of Amsterdam 1994 to 1997. Professor Mahapatra is a professor at Department of History, Faculty of Social Sciences, University of Delhi. Professor Mahapatra specializes in the history of labor, migration, and identity formation. He teaches courses in Delhi University and has authored several publications related to these topics. He is known as a scholar who trained the students who themselves became scholars and are now teaching at the prestigious universities of the world. He is also known as a teacher who broke up the boundaries of feudal teacher-student relationship and established a friendly environment in the Delhi University between students and teachers. His works include The Politics of Representation in Indian Labour Diaspora, West Indies 1890 to 1920, Class Conflict and Agrarian Regimes in Chhotnagpur 1860 to 1950, Labour Relation between India and International Labour Organization. We once again express our pleasure to have you here with us today. Thank you once again, sir, for accepting our invitation. Thank you. Thank you, Anand. Now I request our TIC, Mr. Ashwini Shankar, to formally welcome Professor Mahapatra. Over to Ashwini, sir. Ashwini, sir, unmute yourself, sir. Okay. Am I audible? Speaker of the day, Professor Prabhu Mahapatra. Dear friends, fellow colleagues, and my dear students. It gives me immense pleasure to welcome Professor Prabhu Mahapatra amidst all of us today. As a friend, colleague, and professor in the Department of History at University of Delhi, Professor Mahapatra has been amidst us for a very long time. In an academic career spanning several decades, he has held, as stated by the student, he has held academic and research positions at several eminent institutions like University of Göttingen, Humboldt University Berlin, École Normale Supérieure stationed at Paris, University of Cambridge, International Institute of Social History, Amsterdam, School of Asian and African Studies, London, Yale University, and last but not the least, our very own prestigious Nehru Memorial Museum and Library in New Delhi. In the world of history, and especially that of its sub-discipline labor history,
Professor Mohapatra's academic contributions have been wide and consequential. His research engagements have dealt with transnational labor history, history of labor market formation, history of labor regulation in South Asia, global migration history, history of Indian labor diaspora, economic and social history of modern South Asia, and digital archiving and documentation of social movements, among many other themes. And no surprise it is that not only academic discourses situated around this pertinent topic have benefited from think tanks such as Asian Development Bank and World Bank too. I mean, they have been beneficiaries of his valuable insights regarding the problematics that inform the vast but intertwining domains of labor, society, and economics. No wonder Professor Mohapatra has been a source of regular consultation regarding policy matter by these and other eminent fora. Also in queue with an active life of letters for his insightful, analytical, and critical interventions, Professor Mohapatra has been honored with innumerable academic awards and distinctions. In an age when the issues of labor, economics, societal concerns, and contestation of rights have become a quotidian affair, we can say that Professor Mohapatra is arguably one of the finest scholars present amidst us today to educate and inform us on history as well as historicity, come historiography of labor movements and rights. Friends, now without taking much of your essential time any further, I once again request I welcome Professor Mohapatra and request him to begin his talk and thereby enlighten us and educate us with his profound ideas and reflections. Over to Professor Mohapatra. Thank you. Thank you, Dr. Ashwini Shankar. I'm pretty overwhelmed by your kind introduction, also of the students and of my colleagues in your department. I have a long-standing connection with Deshbandhu College, not only my both family and also friends for a long time, for many years, from at least 30 years. More than 30 years, I've had a great connection with Deshbandhu Department, the Department of History of Deshbandhu College. And I have always wondered at the immense diversity and the ability of the teachers and who teach history to bring together and to communicate so eloquently as Professor Dr. Ashwini Shankar has done, or his other colleagues in the department. I was always amazed at the ability to communicate to such a diverse lot of students. I salute the department for its long legacy of being one of the finest department of history. And I know it from the time when I was studying for my PhD. From that time, I know about this. So thank you very much. I feel greatly honored by being invited by you to speak. I genuinely feel that I don't deserve the epithet of eminent historian, especially after following up on my teacher, Professor Harbans Mukhya, and my great colleague, Amar Faruqi. I feel a bit kind of overwhelmed by being asked to follow their steps. And I have chosen to speak today. I'll take about 45-50 minutes to speak. So please bear with me. I'm not going to I'll tell you what I'm going to speak on so that you don't feel that the title looks pretty abstract. But I would like to speak, basically I wanted to reflect on a particular way of doing history. And what does it mean for someone like me who's an outsider? Because I was not trained in history like many of you are all perhaps trained properly in history. I still feel a lot of being an outsider because I was trained in physics. I came to history after doing and really wanting to be a physicist, and I was not sure what I would do in history, but I think my connection or being close to some of the best minds of our times, teachers and friends of mine,
I have learned a lot from that. So I'm still an outsider, but I teach and have taught now for nearly 20 years. And I feel a bit confident that I can perhaps reflect sometime on what my craft is. History as a craft, it's not an art, it's a craft. You have to, and I know more than anyone else because I come from outside the discipline in some sense, how much what it means to mold material and produce interpretative texts or structures of meaning. So that is my first, what I'm going to speak on. Generally, let me just I'll tell you a little bit. I want to share my screen. So Abhishek, can I just open I have a small PowerPoint and I wanted to just. Yes, sir, you can. So what do I do? I open just share your screen. I think there is a on the below of your screen, you'll find a share screen button. So you just have to click on that. Okay, let me see. Can you see it? Not yet, sir. Okay. My screen is I have a PowerPoint. Okay. No, not this one. I've opened my PowerPoint. Abhishek, I'm sorry, I'm a bit new to this Zoom, perhaps. Sir, on the below of your desktop or laptop, yeah, on this Zoom meeting thing, so you'll find a share screen option. Yeah. In green color. So you just have to click on that, and then whatever window or PowerPoint thing you are selecting, so that all those things will be appear over there, and then you can click on one of them on the PowerPoint wala thing, and then you can we will be able to see. Okay. Yeah, now we can see your screen. Okay, you can see it. Yes, sir. Okay, thanks. Thank you very much. So so I take into account the fact that many of you might not want it to be so burdened with abstract theoretical concepts, but I actually welcome the invitation because I wanted to discuss something which had been with me for some time, how to understand, how to kind of reflect on how to do history. So I'll start off with the idea that I want to know basically how do we create meanings out of the so-called facts. There are many methods of how to create meanings out of it, because what is history? But it's not just a string of facts. You just don't put together facts in one kind of string. That's an important part. You have to know the facts. You have to get the facts right. But it is in trying to generate meaning that we develop some ideas, or at least history becomes meaningful. History is meaningful the way we mold these facts, or how do we interpret, or how do we find fact. In a way, how does meaning arise from facts? And this has always bothered me, and I knew that a lot of philosophers also were bothered. Does meaning flow out of facts like steam out of water? When you heat water, steam comes out. Does meaning come out like that? That you just work on the facts and they produce a meaning by that? They don't, and we know that. So what are the methods used by historians, especially, to find these to create meaning? And we know that there are many ways in which historians have done it. One is, of course, that they use the basic methods or basic tools used by scientists or any inquirer or social scientist in some ways. What they do is to kind of use the standard tools of gathering facts, finding relevant facts, and then putting some operation on it, certain mental operation, both mental as well as material operation, through which concepts are there, or use concepts to kind of in a way generate meanings out of these facts. You use standard. We know that there are two basic ways in which most of this have been done. First is to generate inferences through deductive reasoning. That means you have a set of theoretical premises,
certain well-known laws or something you know very well, and you apply it to these facts and then generate an inference. So you deduce a meaning. हिंदी में इसको कहते हैं शायद मैं हिंदी में उसका मतलब नहीं समझ पाया, निगमात्मक. That means something from the general you come to the concrete thing. You actually from a cause, general cause, you find the effect. So ये इसका नाम है निगमात्मक analysis or निगमात्मक deductive reasoning. निगमनात्मक तर्क. Okay. Then the other is inductive reasoning, which we know, which comes from a set of facts, and then we generate general laws from the facts. From facts, we make a kind of find a generalization. That's called generalization through inductive reasoning. इसको हिंदी में विवेचनात्मक कहते हैं या आगमनात्मक कहते हैं. But basically, from a set of facts, you generate, from a small sample of facts, you generate larger inferences. You draw large inferences. But how do we go from one to the other? Deductive reasoning we can understand, because actually the premises contain already. The premises, that means the assumptions, already contain within them the inference. So all you have to do is just take out the inference from the enclosure of the facts themselves, or set of facts from which you draw out the inference. They're already enclosed there. But how does, from inductive reasoning, how do we take this jump from, how do we generate and jump from there and find meaning from jumping from facts, a small number of facts, to find some meaningful way of explaining it? Some people have said that this is a completely different way of thinking, that it is an interpretative mode, hermeneutics. That is the way in which you study or try to develop meaning by studying text. First by studying text, but historians apply it to several such semiotic or systems of science to derive certain meanings. How does meaning leap out from there? In fact, I was always very, very worried about that. I was, of course, trained in science, so I had some basic scientific method knowledge, but I didn't see how it could be applied to history and historical thing, where it is so much is dependent on this interpretative modality. So in this thing, I tried to understand, and I'm going to say that what happened when I was in 1980, I was studying for I just joined my PhD program, my MPhil PhD program at JNU, and I had just had a very, very kind of abbreviated training in history for 2 years in masters. I was barely I must say I was a complete, but it's there that I started learning about. And then in 1980, I remember chancing upon this article by Carlo Ginzburg, which came out in 1980 in a journal called History Workshop Journal. And that was I was completely taken up by this. And perhaps my love for history, or at least the idea that I could do history, was triggered by Ginsberg's this wonderful essay. So what I'm going to do is basically look at 4 essays and four kind of stories which would come out from these essays. So first is Carlo Ginzburg's essay called Morelli, Freud, and Holmes. Holmes is Sherlock Holmes, called Clues and Scientific Method. It came out in 1980, a translation of Italian translation of Ginzburg is now very famous. I hadn't read his most famous work, which is Cheese and Worms, but I read this article, and it gave me an amazing way of looking at it, because it was so wide-ranging. So I want to just tell you how or what things came to me. How do we generate meaning from? And there I learned that whatever happens, and this is a problem, तथ्य से समझ कैसे निकलते हैं, उसके बारे में जो बताए थे कार्लो गिन्सबर्ग, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका था. उनका था कि देखिए, जैसे the way the hunters track animals, जैसे वो ट्रैक करते हैं, क्लूज देके, छोटा सा क्लू, किसी का
फुटप्रिंट देख के उसके अंदर से निकालते हैं इमेज, इमेजिन करते हैं अच्छा यहाँ से एक टाइगर गया है, टाइगर का थोड़ा सा किसी ये से देख के वो द नियोलिथिक हंटर टाइम से पीपल हैव द ट्रैकिंग फ्रॉम क्लूज एंड इमेजिनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ योर hunting object of your hunt. That ability was at the heart, as he said, of understanding, and he connected it to the way Sherlock Holmes did it. Sherlock Holmes, आपने कोई भी पढ़ा है Sherlock Holmes की कहानियां, तो उसमें कैसे Sherlock Holmes छोटी छोटी क्लूज से पूरी एक बड़ा चित्र बनाते हैं. एक पूरी मतलब छोटे क्लूज से, जैसे डिटेक्टिव होते हैं, फ्रॉम द डिटेक्टिव्स or the way he can imagine a picture from, say, footprint, or from a little bit of some traces which could be, or clues from which he could generate this image. Now that itself, the process of generating that image from the clue also told me, and he said it very clearly, that देखिए fact या clue में से जो हम image बनाते हैं उसके बीच में कोई संपर्क नहीं है, ये संपर्क हमने बनाया है. We have made a leap of faith to generate that image, the image of a, say, live animal from the clues of it. And this modeling, this jumping from the fact to meaning, he called it conjecture, conjectural paradigm. And a conjectural paradigm, he said, is perhaps applicable to certain types of knowledge systems, not for everything, but it is important for history, for instance. Which are the types of knowledge systems where those are applicable, according to? I'll tell you what the conjectural paradigm was. His idea of conjecture was that you can generate these meanings not arbitrarily. कुछ भी हो जाए, हम कोई भी fictional कोई भी चीज नहीं देख सकते. We have to have control, or in some ways have some control over the way we jump from facts, तथ्य से meaning or understanding or knowledge generate करना, inferences draw करना. ये जो jump है, it is through a conjecture. Now, where does the conjectural model apply? Conjectural model, according to him, applies mainly in science or knowledge systems in which we have both a study of, or both a kind of inquiry after patterns of the types, that means understanding general patterns, but also absolutely central to that is the absolutely of the unique, of the individual, of the unique and the individual, or the contingent. English में कहते हैं contingent. So एक pattern और एक individual illustration. इनमें ये दोनों तरीके के चीजों को मिलाने के लिए जो मॉडल होता है उसको कहते हैं वो conjecture model. Conjecture का मतलब मैं अगर जो हिंदी में अच्छा कह सकता हूँ, I don't know, Ashwini, can you help me out? Conjecture means, I think, अनुमान लगाना. It is a kind of a combination of intuitive reasoning and controlled intuitive reasoning. उसका एक बड़ा interesting कहानी मैं बस उसी कहानी से लेता हूँ, but I take out this point about conjecture as very, very important for me. And I'm telling this story which is there in it's called The Lost Camel or Three Princes of Serendipity. Can you see this? If you can see it, please. Abhishek, can you see the whole thing, or is it? Yeah. Lost Camel or Three Princes. ये कहानी हम लोग भी बचपन में सुने हैं, उसकी बड़ी नाम है. The story itself is interesting because it is seemed to the history of the story itself tells you a lot. It seems to have emerged sometime in Persia, that is present-day Iran, and was transformed and had come to had been retold by Amir Khusro in India, and had from there gone on. वहां से ये स्टोरी गई है इटली में. इटली से 1557 में इटली में एक कहानी बनी. फिर उसके बाद इसका बड़ा इंटरेस्टिंग आया कि ये एक कहानी उसके साथ जुड़ गया, जिससे हम एक वर्ड बनाते हैं I'll come to that, serendipity. What is the story of Lost Camel? ये कहानी है कि तीन भाई जा रहे थे. Three princes sometimes कहा गया, three princes. Sometimes it's not a camel, it is a horse or a mule, but an animal
एक आदमी अपना घोड़ा या इधर कैमल को खो दिया था. He thought. So he finds these three brothers who are out on tour for adventure, and उनसे पूछा, भाई आपने हमारा कैमल को देखा क्या? आपने हमारे ऊंट को देखा क्या? तो पहला आदमी बोलता है, हाँ मैं नहीं बोला, नहीं हाँ नहीं देखा. बोला, क्या उस कैमल का एक आंख अंधा है, एक आंख में काना है, वो कैमल का काना है? He said, हाँ. तो आपको कैसे पता हो? He said, नहीं मैंने देखा नहीं, मगर मैं जानता हूँ. फिर दूसरा भाई को पूछा, अरे उसका एक टांग लंगड़ा है क्या? वो बोला, हाँ. अरे आपको कैसा पता हुआ? और तीसरा बोला कि उसको कोई इंजरी है, उसके खून नहीं, उसकी जो पूंछ है उसमें वो बहुत छोटी है क्या पूंछ? बोला, आपको कैसे पता हुआ? तो उसके बाद वो कहानी है, इसी तरह की कहानी है. उनको पूछा गया, बोला कि नहीं हमने देखा नहीं. तो राजा के पास ले गए, भाई ये तो हमारा कैमल चोरी किया है. तीनों भाई ने बोले, नहीं हम चोरी नहीं किए, बट हम अपना इसी क्लूज से हम आपको बता सकते हैं कैसे पता चला कि कैमल कैसा है. तो राजा बोला, कैसे? बोला, ये कैमल का एक आंख अंधा है, पता चलता है क्योंकि वो जो रास्ते में गया है, कैमल गया है, एक तरफ ही खाना खाया है, एक ही तरफ ही उसने मतलब जैसे जो पेड़ है, पौधे हैं, उनमें वो एक ही तरफ का खाना खाया. लेफ्ट का आंख है ठीक, तो लेफ्ट में खाया, राइट को छोड़ दिया उसने. तो उससे हमें पता चला कि वो एक तरफा जो खा रहा है, उसके लिए वो एक खाना है. उसका फुटप्रिंट पता चल रहा है कि वो एक पैर लंगड़ा के चल रहा है, क्योंकि लंगड़ा के वो ड्रैग कर रहा है अपना पैर को. तो उससे हमें पता चला कि वो लेम है. तीसरा है कि he has now, what do you call, he has there are these flies जो कि या bees या कोई इंसेक्ट उसको काट रहे हैं, उससे उसके खून निकल रहा है, मगर ये अपनी छोटी पूंछ होने के कारण उसको हटा नहीं पा रहा है, और खून के धब्बे गिर रहे हैं. हम देख लिए कि ये इसका प्रॉब्लम ऐसे कैमल है. एज इट टर्न्ड आउट उसका कैमल मिल गए, बट राजा खुश होकर इन तीन भाइयों को एडवाइजर बना दिया. यही कहानी बहुत दूर जाके बन गया, कॉल्ड द थ्री प्रिंसेस ऑफ सेरेंडिप. नाउ सेरेंडिप इज द नेम फॉर श्रीलंका. सुवर्णद्वीप कहते हैं या सिन्हला द्वीप से द वर्ड केम सेरेंडिप, एंड दिस वर्ड बिकेम देन द origin of, and this story exactly, three princes of Serendip became the story about, and the term serendipity. Serendipity is where you generate a excess of, that means you get a windfall gain. Somehow आपको बहुत जो आपको पता नहीं, आपको चांस मिला, मगर उससे बहुत ज्यादा आपको कोइंसिडेंस हुआ या कैसे हुआ, आपको एक बहुत ज्यादा फल मिल गया. So this form of being is called serendipity. कि आप कहीं जा रहे हैं, कुछ चीज मिल गया आपको, जैसे कोई फल मिल गया बहुत जल्दी. But it, of course, serendipity का story is very much connected to the way they could generate a excess of meaning from a limited number of clues. Okay, so that's the story of serendipity and conjecture that I said. The second story that I wanted to tell you comes from another philosopher whom I read that time, exactly in 1980s. I was reading this actually a book called Theory of History by Agnes Heller. Agnes Heller, a very famous philosopher, है, उनकी पढ़ रहा था, and I was very much, because she had a theory of history which I thought was very, very I understood, and I tried to. So what was her theory? Her theory was history is about traces, and how are these traces which come from the past? She was very sure that history is about understanding of the past, but we don't get things which we want. We get traces. We don't get whole of the past. We get traces of this past. It could be a trace in terms of a material object, or it could be a trace in terms of a ideal a story, so it is never a full thing that you get. You get a piece, a fragment, not a fragment, but a little bit of clue. Let's say the clue from the past which comes to us, and this she termed as document, the traces, and from the traces, she said, the historian works on it to create the meaning or create a meaning structure. Now, how did she? And
I like the story she told in this, drawing from a story by Jules Verne. Jules Verne का नाम आपने सुना होगा, Around the World in 80 Days. कोई देखा है, पिक्चर देखे होंगे या पढ़े होंगे, या दूसरा वो 19th सेंचुरी के फ्रेंच राइटर थे, और दूसरा किताब उन्होंने, दूसरे बहुत फेमस किताब है 20,000 लीग्स अंडर द सी, कैप्टन नीमो, नॉटिलस, ये सब कहानियां हमने साइंस फिक्शन के, वो मतलब he was the almost the progenitor of science fiction in the 19th century, a French writer. And in his writing, one of the story or novella, you can novel, he wrote, which is called In Search of the Castaways or Captain Grant's Children. Now, ये कहानी मुझे बोलने बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं थोड़ी 4-5 मिनट में बोल रहा हूँ, because this also reiterates the point I was trying to make. How do we generate inferences and what is the possibility? How do we generate? ये कहानी इस तरह की है, एक जहाज 19th century का है, एक ship owned by a very rich Englishman and his family. They are traveling around England, and on the Scotland की जो northern channel है, Scotland और England और northern sea के ऊपर, वहाँ जब travel कर रहे हैं तो उनको वहाँ एक मछली उनके लोगों ने मिला। तो मछली जो पकड़े वो शार्क, वो तो मिलना नहीं, बोले शार्क यहाँ कैसे आ गया? तो शार्क मछली देखे, तो जब वो शार्क देखे, अच्छा देख लिया, अच्छा उसको फेंक दे रहे थे, काट दिए थे, फिर उसको फेंक रहे थे, देखे कि उसके पेट में एक बॉटल नुमा कोई चीज है। तो ओनर बोले, लॉर्ड, उसका नाम था लॉर्ड ग्लेनवेरन, वो बोले अरे इसके अंदर देखो, ये कभी कभी इनके ये में काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी मिल जाए, डॉक्यूमेंट मिलता है। तो क्या मिला उसके अंदर? एक बोतल मिला। बोला अरे ये बोतल क्या है? सो बोतल के अंदर वो देखे कि वो बोतल बहुत वो है, उसके अंदर कुछ मैसेजेस थे। अनफॉर्चुनेटली वो मैसेज जो है पानी अंदर घुस गया, तो मैसेज में लिखा हुआ था हाथ में कुछ, मगर वो ठीक से पढ़ा नहीं पा। 3 डॉक्यूमेंट थे, एक फ्रेंच में था, एक जर्मन में था और एक इंग्लिश में था। ये तीनों डॉक्यूमेंट को वो लिख के वो पूछे कि क्या लिखा हुआ है। तब धीरे धीरे वो डॉक्यूमेंट जो लिखा है, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट शो यू, इट्स अ स्मॉल स्निपेट, एक छोटा सा स्निपेट है। जैसे कि समझिए कि एक किताब, एक पन्ने पर पानी फिर गया, तो कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, कुछ आधा दिख रहा है, कुछ। तो उन्होंने वो उसको पढ़ के उसको समझने की कोशिश, जस्ट लाइक अ हिस्टोरियन or anyone tries to read a document where full information is not there and try to generate understanding, a full picture करने। तो इस कहानी ऐसा है कि पहले वो उनको लगा अच्छा ठीक है, इससे पता चले एक ब्रिटिश शिप कैप्टन, उसका नाम था कैप्टन ग्रांट, वो 2 साल पहले वो पृथ्वी के भ्रमण कर, मतलब वो किसी ये पे गए थे, वॉयज पर गए थे दूर रास्ते पे, और उसके बाद उसका खबर नहीं है। वो ग्लासगो से गए थे, उनका खबर नहीं है, 2 साल से वो मिसिंग है। तो ये देखे बोला अच्छा शायद इसी में उनका क्लू है, कैप्टन ग्रांट ने शायद इसको फेंका है, हमें देखेंगे क्या मिल रहा है। तो ये कहानी जो कैप्टन ग्रांट की कहानी, तो फिर वो उसको पढ़ के वो कहते अच्छा ठीक है। तब उनको लगा कि ये वाला देखिए खाली लैटिट्यूड लिखा हुआ, लॉन्गिट्यूड नहीं दिया गया है, तो कैसे एनीवे, तो एक थियरी लगाया उन्होंने। उस थियरी से ये जो छोटे छोटे फैक्ट थे उनको मिला के बोले अच्छा ये तो लग रहा है कि साउथ अमेरिका में वो है। तो वो साउथ अमेरिका चले गए। वो कहानी है कैसे वो साउथ अमेरिका गए, साउथ अमेरिका में खोजे ये एक्चुअली एक कहानी अपने आप में जूल्स वर्न की एक एडवेंचर स्टोरी है। वो सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारे नए जगह की डिस्क्रिप्शंस होती है। तो वो पैटागोनिया गए, चिले गए, और उनकी कहानी अलग है, बट वो जैसे लगा कि वो कैप्टन ग्रांट वहां मिले नहीं। फिर वहां से फिर उन्होंने एक नया थ्योरी लगाया कि अच्छा शायद ये नहीं है, ऐसे है। वो कहाँ गए? ऑस्ट्रेलिया। बोले ऑस्ट्रेलिया में शायद है। तो वहां से वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। फिर वहां ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी कहानियां, ऑस्ट्रेलिया में उनको हर जगह उन्हें मिलते हैं। वहां के आदिवासी लोग हैं जैसे, वहां भी मिले, और वहां मिलके वो देखे वहां भी नहीं है। फिर गए न्यूजीलैंड भी नहीं मिला, मगर न्यूजीलैंड में और कोई बाई चांस एक जगह में आदमी मिल गए। फिर उनको वो हुआ कि सो देन थ्रू ए चांस कोइंसिडेंस, आफ्टर अटैचिंग थियरीज टू दीज वेरियस on these documents, applying the theories,
which seemed that facts all fit, then we'll find this, but they didn't find it. So meaning जो है वो उन्होंने तो पिक्चर बना लिया, मगर वो पिक्चर में मिला नहीं, कैप्टन ग्रांट नहीं मिले, एक जगह नहीं मिला, दूसरी जगह नहीं मिला, तीसरी जगह नहीं मिला. बट फिर वो कह रहे थे उनको वो एक आदमी मिला जो कि वो कैप्टन ग्रांट के साथ था, वो उनको धोखा दे के वो पायरेट था, वो पायरेट बनना चाह रहा था, ये इनको कर रहा था, बट ये लोग उसको पकड़ लिए और बोला कि भाई साहब अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो इंग्लैंड जाऊंगा तो मुझे फांसी हो जाएगी, आप मुझे यहाँ कहीं जंगल में छोड़ दीजिए, एक टापू में छोड़ दीजिए. और बाई चांस जब वो टापू में पहुंचे वहां कैप्टन ग्रांट मिल गए. ना again this idea of a serendipity, that by after applying all kinds of theories and going through it, a chance conjuncture, chance meeting produces the final result. The result, supposing your inference is to be there, Captain Grant is your object, you want to find the answer, but Captain Grant को आप जिस तरह से थियोरी लगाए, वो फैक्ट्स लगाए, उससे नहीं मिला, वो चांस की एनकाउंटर से मिला, कॉन्टिजेंसी से मिला. ना इसी से जो एग्नेस हेलर की कहानी है, एग्नेस हेलर की look, historians are condemned to interpret, even if their interpretations do not find the historical truth. They have to interpret, they have to go in search of Captain Grant. मगर कैप्टन ग्रांट तुम्हारी थियोरी से मिले नहीं, एक बार नहीं मिले, दो बार नहीं मिले, मगर मिलते कब हैं? Through conjuncture, through coincidence and conjuncture. ये मेरी दूसरी कहानी. Coincidence, contingence and conjuncture produces the final meaning. Now this I take it as the third story that I want to speak about, which is again an interesting where I reiterate how we generate, how can you generate meaning, and the problems or the possibilities that we have. So this again is about it's a well-known story. आप लोग कैप्टन कुक की नाम जानते हैं. डेथ ऑफ कैप्टन कुक 1779 फरवरी 14 में हवाई में उनकी थर्ड वॉयज में he was killed in Hawaii. 1779 फरवरी 14th, अभी वो है वैलेंटाइंस डे, अभी कुछ दिन में है परसों, he was killed in Hawaii. Now there has always been a story about how he was killed. Why he was killed? He was killed by the local Hawaiian, जो indigenous people थे, they killed him. Now, Captain Cook is a kind of a great मतलब explorer, discoverer of lands. उनके ऑस्ट्रेलिया के जगह पे डिस्कवरी किए थे ऑस्ट्रेलिया, उनके नाम पे भी आइलैंड्स है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में काफी घूमे हैं. तो कैप्टन कुक की डेथ के बारे में काफी दिन तक 1960 वो ना कि केवल उनके डेथ अराउंड मिथ बन गए, वो बहुत ही मतलब he was a hero, a martyr in some sense, and the story has been so why was he killed? Some said that he broke a taboo, or he was killed because of the deceitful nature of these people, or that they were जो आदिवासी लोग थे वो सह नहीं पाए, वो मार गए. मगर एक इंटरेस्टिंग चीज था कि जो उनके साथ गए थे, उनके पास 2 शिप्स थे, डिस्कवरी और रेजोल्यूशन करके 2 शिप थे. उस शिप की लॉग्स में हमें पता, वो लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेशन जो दूसरे शिप के लोगों ने लिखा, उसमें पता चलता है कि एक्चुअली वो जो पहले गए वहां, वो उनको बहुत सम्मान मिला था. ऐसे सम्मान मिला था कि उनको कहा गया कि वो भगवान है. वो भगवान कौन है? मैं आपको एक फोटो दिया हूँ, इसके साइड में वो दिख रहा है कि नहीं, ये वाली जो दिस पेंटिंग इज अबाउट हाउ कैप्टन कुक, दिस इज कैप्टन कुक हियर, and he's being murdered by someone from behind. And on your right, if you can see that, Ashwini, आप देख पा रहे हैं? हाँ, okay. I can't see it because I think my thing is anyway. Okay, this is called the god Lono, and he's at one point कैप्टन कुक को मतलब लोनो की तरह माना गया था. लोनो कौन है? लोनो जो हवाई के ये में, लोनो was a god of fertility god, और उनका जो आगमन होता है या उनकी जो ये होती है, जो पूजा होती है वहाँ, वो पूजा होता है वो हवाईयन न्यू ईयर में. हवाईयन न्यू ईयर क्या होता है? 3-4 महीने का उनका
सेलिब्रेशन होता है। हवाई की बहुत सारे आइलैंड्स हैं, हवाई में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो डिफरेंट आइलैंड्स में ये है कि ये जो गॉड है ये फर्टिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बाद मतलब अच्छा फसल हो, अच्छा उनको प्रॉस्पेरिटी मिले लोगों को, इसलिए करते हैं वो लोग। मगर एक अजीब सा रिचुअल भी है। लोनो जो है वो आते हैं 4 महीने, मतलब एक पीरियड होता है जब आप जानते हैं क्या कहते हैं उसको, 7 प्लीड्स जो है, 7 सिस्टर्स हम कहते हैं, जो तारापुंज हैं आकाश में दिखते हैं, तारापुंज 7 सिस्टर्स प्लीड्स, उसको वो जब हवाई की ये में दिखता है पहले शाम की वो में पहले जब उठता है अक्टूबर के महीने में, तब वो ये सेलिब्रेशन शुरू होता है और वो 4 महीना तक चलता है और वो रफली अबाउट जनवरी या फरवरी तक चलता है। तो क्या हुआ कि जब और एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये लोनो जो है जब आते हैं उनको वो पूरा सारा आइलैंड को घूमते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, एक क्लॉकवाइज तरीके से घूम के आते हैं और जहां से शुरू हुआ है अल्टीमेटली वहां तक आते हैं। और इससे ये इनकी स्टोरी जो है, रिचुअल जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल है। उसमें राजा या चीफ्स जो है, चीफ जो सबसे बड़ा चीफ है और उनका संबंध है लोनो और उनका बीच में एक मॉक फाइटिंग भी होता है, मॉक लड़ाई होती है। और ऐसा है कि लोनो एक तरह से लोनो का मृत्यु और लोनो मर जाते हैं, जैसे हमारे कहते हैं विसर्जन होता है, वो उनका विसर्जन हो जाता है, फिर वो खत्म हो जाता है उनका कहानी। सो एक है कि वो क्लॉकवाइज घूम के हर आइलैंड में घूम के हर जगह पे घूम के फाइनली वहां आते हैं, फिर वो उनको एक लड़ाई होती है लोनो की आर्मी और चीफ की आर्मी में, फिर उनको लोनो को भेज देते हैं लोग। तो उसके बाद फिर फर्टिलिटी रिचुअल सब बहुत सारे खेल और ये सब होते हैं, अच्छा होता है। ऐसा हुआ कि कैप्टन कुक जो है वो काफी दिन से 3 बार वो उस एरिया में घूमे हुए, काफी दिन से घूमे हुए थे। तो उनको काफी वो न्यूजीलैंड में माओरी लोगों के साथ, सैंडविच आइलैंड में, ताहिती में, पॉलिनेशिया के सारे आइलैंड्स में कैप्टन कुक के बड़े मतलब वो उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग संबंध रखे हैं उन्होंने। तो वो आके हवाई में जब पहुंचे हैं, वो पहुंचते हैं जनवरी 17 को। जनवरी 17 है ये जो फेस्टिवल है न्यू ईयर फेस्टिवल का बीचों बीच दिसंबर में। और फेस्टिवल में जब पहुंचते हैं तो वो जब देखते हैं कि हजारों की संख्या में लोग आते हैं उनको देख के, हजारों की संख्या, 10,000, nearly 10,000 islanders come to collect him and to give him food, give him all kinds of things. They start giving. They're totally, because they, according to, I'm going to talk about it, they think that he's the god Lono who's arrived on his because he had come circumambulating right clockwise में होके वो आके पहुंचे थे 17 तारीख को। वहां 17 तारीख को उस जगह पे पहुंचे, तो उसको वो लगा कि ये लास्ट 20 दिन जो उनका लास्ट फेस्टिवल है, उसी के टाइम में ये भगवान व्हाइट गॉड आके पहुंचे हैं। और इसीलिए उनको काफी एक सम्मान के साथ लिया गया। वो इनफैक्ट वो भी खुद अपने आप को भगवान समझ के उस जगह टेम्पल में रहे, अच्छा से वो रहे वहाँ कैप्टन कुक, और कुछ दिन रहे, 15 दिन तक। और 2 तारीख फरवरी 2 को जब ये पूरा उनका जो नया सिस्टम खत्म, 4 महीना का सेलिब्रेशन खत्म हो गया, उनको वापस जाना है और वो चले भी गए वापस। 2 तारीख को वो फरवरी 2 को वापस चले गए। वो चले गए जब वापस, उनको काफी आराम से ये सब भेजा गया, वापस भेजा गया उनको मानने करने के लिए। मगर जब वो चले गए, रास्ते में उनका जो है शिप खराब हो गया, मतलब उसका जो वो सेलिंग मास्ट था वो टूट गया और वो उनको फिर वापस आना पड़ा। मगर जो वापस आए तो लोगों ने देखा कि ये तो वापस आ गए, क्योंकि लोनों की जो सर्कुलेशन है वो एक बार हर साल में एक बार चले जाते हैं, वो अगर फिर वापस आ गए तो एक बड़ा अशुभ माना गया। और ये लोग काफी जब ये पहुंचे, ये सोचे कि हमें फिर से वैसे ही मिलेगा, मगर उनको ऐसे नहीं मिला। काफी हॉस्टाइल रहे लोग। बोले आप कैसे आ गए? बोले हम तो आए, हम अपना करें। तो वहां देखे कि काफी लोगों में काफी असंतोष रहा, काफी चोरी करके उनके सामान ले गए शिप से लोग। इंस्टेड ऑफ गिविंग देम थिंग्स, दे टुक अवे थिंग्स।
एंड तब देखा गया कि लोनो तो ये गुस्सा होके जब गए अंदर वहां, तो फिर वो अपने वो जो चीफ थे उनको लेके आ रहे थे, चलो तुम देखो हमारा क्या चोरी किया है तुम लोग। तो जब ला रहे थे रास्ते में तो पूरा उनको उन पे टूट पड़े लोग और उनको मार दिया गया। ये जो पेंटिंग है वो उनके ऑफिस जो ऑफिशियल पेंटिंग से बने, ऑफिशियल शिप का जो पेंटर था उसी ने खुद जॉन बर्बर करके उसका पेंटिंग से आया है। Now this particular understanding, yes, Vasudha, yes, hello Vasudha, okay. So they came back, and what happens now is that कैप्टन कुक आ गए तो मर गए, उनको मार दिया गया और लोगों को पूछा गया क्या क्या, फिर वो उनको मार के उनके बदन को पूरा काट गया सब कुछ, एंड वो कुछ उनका जो अस्थि विशेष था उसको लेके वहां उनके शिप में गया। बोले भाई आप क्या वापस फिर से आ जाओगे, क्योंकि वो तो समझ रहे हैं कि गॉड है तो वापस आ जाएंगे। ये जो कहानी है इसको मार्शल शाहलिंस एक बहुत ही फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और मेरे पे उनका काफी इन्फ्लुएंस उनसे। मार्शल शाहलिंस एक उनका रिसर्च से पता चलता है। वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है बट वो काफी हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी में विश्वास रखते थे और उन्होंने डिटेल स्टडी, रिचुअल स्टडी करके उन्होंने ये बताया कि ये जो है ये प्रॉब्लम एक हो गया, इंस्टेड ऑफ कोइंसिडेंस इसमें देखिए एक अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस हो गया। क्या हो गया कि जो लोनों की क्योंकि वो समझते थे कि ये भगवान है, लोनों की जो वापसी होना ही नहीं चाहिए, ये जो वापसी हो गई उनकी, द फैक्ट दैट he returned created this mismatch, a kind of anomaly, cosmological anomaly in the understanding of the people, and the only way that could have happened was by killing him. In fact उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग रिचुअल एनालिसिस करके बताया कि देखो वो स्टोरी है कि लोनो और चीफ के बीच में लड़ाई होती थी, एक मॉक लड़ाई होती थी, उसके बाद लोनो को वापस कर दिया जाता था, वो फिर अगले साल आना। मगर इसमें उल्टा हो गया, वो तो लोनो वापस आ गया, तो ये सारा रिवर्स हो गया। तो उसको इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ लोनोज आर्मी कमिंग फ्रॉम द थिंग एंड और बीइंग अटैक्ड बाय द चीफ्स or being fought by the chiefs, now Lono came from the sea, returned from the sea. Instead of being sent out, he returns back to the sea. He breaks this, whatever that the taboo, or breaks the ritual cycle, and he's killed because of that. Now, ये जो कहानी एक तरह से ये भी एक कोइंसिडेंस है, बट एक अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस है। इसकी जो मीनिंग है इसको समझने के लिए और एक करने के लिए हम अपना क्या नाम है उनका, मार्शल शाहलिंस का। बट ये जब मार्शल शाहलिन ने ये लिखा 1985 में, इस पर काफी कंट्रोवर्सी हुआ 1985 में। और गणनाथ ओबसेकर और एक, he was a very famous anthropologist from Sri Lanka. He wrote a book attacking मार्शल शाहलिन की। ये गोरे लोग क्यों समझते हैं कि जब भी हो कि हम लोग सब, या हम लोग कॉलोनाइज लोग या नॉन वेस्टर्न लोग, सबको जब गोरे लोगों को देखते हैं सब समझते हैं भगवान हो गया। ये कंट्रोवर्सी काफी इंटरेस्टिंग, काफी देर तक चला। But overall, my point is not to take sides in this controversy, but to actually point out that how Shahlin's explanation is based on this particular ritual or particular anomaly or lack of coincidence, or let's say unfortunate coincidence that I wanted. So the meaning, that means the death of Captain Cook, could be understood in different ways. He could be seen as a European imperialist who's been killed by resistance of the thing. He could be seen in different ways. But if you look at carefully, according to Shahlin's, you would see that this is partly due to this, due to the ritual inversion which happened. इसको उन्होंने एक शब्द उन्होंने यूज किया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है, वो क्या एक टर्म यूज किया, स्ट्रक्चर ऑफ conjuncture. Now conjuncture is any event which happens. उसी इवेंट में a set of relationships are brought in conjuncture में, और ये स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर जो है इसी कंजंक्चर में ये रिप्रोड्यूस होता है। मतलब हर साल रिचुअली ये रिप्रोड्यूस होता है। हम जैसे दुर्गा पूजा करते हैं या किसी और पूजा करते हैं या और भी होता है, वो पूजा में रिप्रोडक्शन होता है। बट साइलेंस का मेन पॉइंट था कि
हर बार अगर यही रिपीट होता रहता है तो फिर चेंज कैसे आता है? तो ये कंजंक्चर में चेंज होता है, बिकॉज people either do this or change the practices through culturally generate different meanings. तो लगता है कि वो रिपीटेशन हो रहा है, मगर इसी के रिपीटेशन के थ्रू ही हम देखते हैं कि नया मीनिंग और नया एक्शन, ये इस तरह के एक्शन के थोड़ा नया मीनिंग्स भी पैदा होते हैं. तो ये इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि एक तरह के हिस्टोरियंस कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस. एंड फाइनली that's my last story, which I would give me 5 minutes, and this is a story based on my own research. So मुझे मेरी रिसर्च से इस तरह की जो conjectural study है उसके बारे में, एक conjectural model, conjunctural model और coincidence, conjuncture या conjecture, अनुमान से कैसे इतिहासकार अनुमान यूज कर सकते हैं. तो मैं एक कहानी, ये मुझे लगेगा ये लास्ट पॉइंट है कि ये है ट्रिनिडैड वेस्ट इंडीज में एक जगह है, आइलैंड है. वेस्ट इंडीज मतलब यहाँ 19वीं शताब्दी में काफी नियरली 1.5 लाख लोग इंडिया से वहां गए बसने के लिए, लेबर काम करने के लिए वहां गन्ने की खेती में. वहां उस गन्ने की खेती पहले ब्लैक लोगों की होती थी, या African slaves used to do it, but Indians now went in the 19th century. Once slavery was abolished throughout British Empire in 1833, Britain got Indian and Chinese labor to come and work in these plantations. गन्ने की, ये मॉरिशस में है, फिजी में है, वेस्ट इंडीज में है, साउथ अफ्रीका में थे. ये इंडियन वर्कर्स जाके वहां शुगर गन्ने की खेती करने गए थे. बट ऑफ कोर्स दे वेंट अंडर कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक बहुत ही ये इंडेंचर कॉन्ट्रैक्ट में गए थे. जो उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि आप जाएंगे, आपका कोई आपकी ये नहीं होगी कि आप अपना चेंज कर सकते हैं, अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं, या आपको अच्छा नहीं लगा तो आप वापस आ सकते हैं. कुछ नहीं, आपको रहना पड़ेगा, 5 साल काम करना पड़ेगा एक ही एम्प्लॉयर के पास, और 10 साल रहोगे उसी सिस्टम में, उसके बाद शायद आपको वापस आ सकते हो. तो हजारों की संख्या में जब लोग गए वहां, तो ये इसकी कहानी है कि 1884 में 1884 in Trinidad, a particular incident happened. What happened in 1884? The festival which was most common and most popular in Trinidad and in the West Indies amongst Indian laborers was called Muharram. And I have to say that Muharram was celebrated in the 19th century. मुहर्रम जानते हैं, इस्लामिक शिया इस्लामिक फेस्टिवल है, बट सुन्नी, भारत में सुन्नी भी करते हैं उसको, और कहीं कहीं सुन्नी और शिया में झगड़ा भी होती थी, और मुहर्रम के कारण बहुत झगड़ा भी होते थे हिंदू मुस्लिम में, मगर हिंदू लोग काफी इसमें करते हैं. बट मोस्ट अमेजिंग थिंग इन द लेबर डायस्पोरा जो था इन 19th सेंचुरी में, कि मुहर्रम वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, नॉट एनीथिंग एल्स. मुहर्रम में ताजिया बनाना, ये जो ताजिया मैंने दिखा रहा हूँ ताजिया है, वो ताजिया बनाते थे, और 10 दिन ताजिया के पास वो काफी फेस्टिवल होता था उसी हर ये में. और लास्ट डे में ताजिया को लेकर प्लांटेशंस में या एस्टेट्स में, शुगर एस्टेट से बाहर लोग लेके आके उसको पानी में, शहर में पानी में डालते थे. ये जो प्रथा है ये 1855 में पहले बार मुहर्रम आया. मुहर्रम की फेस्टिवल को हम जानते हैं रिकॉर्डेड हुआ ट्रिनिडैड में, और ये 1884 और ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद ये कहानी. उसमें क्या हुआ है कि सरकार ने मना कर दिया कि आप ये प्रोसेशन, मुहर्रम का प्रोसेशन नहीं कर सकते. आप रास्ते में लेके हजारों की संख्या में हर स्टेट से लोग 10-12 हजार, कभी कभी 15-20 हजार लोग जाते थे शहर में. शहर छोटी होती थी, वहां प्लांटर्स रहते थे, बड़े बड़े वो रहते थे, वो बड़े डर जाते थे. इतने सारे इंडियन वर्कर्स जाके पहुंचते और काफी ड्रम वम लगा के नाचते थे, और उसके साथ वो लकड़ी का वो खेलते थे, क्या कहते हैं, स्टिक प्ले करते थे, आप जानते हैं वो लाठी का खेल वो करते थे. ज्यादातर लोग जो है 90% जो है आए थे फ्रॉम बिहार एंड यूपी, एंड अमंग्स देम 90% were Hindus, or 85% were Hindus, and 15% were Muslims. But this was a festival of the Hindus and Muslims together, all of them. What happens on 1884?
throughout from the beginning of the session of the season, the government has banned this procession. बैन के आप नहीं आ सकते, बट 1884 में ये लोग जाते हैं प्रोसेशन में और वो बैन को डिफाई करके पहुंचते हैं. एंड इन दैट थिंग दे आर, एंड देयर इज द पुलिस और द आर्मी, आर्म्ड पुलिस उनको 3 जगह पे, शहर के 3 जगह पे रोकते हैं और उनको मना करते हैं कि आपको वापस जाना है, और रायट एक्ट पढ़ते हैं, मगर उनको तो समझ ही नहीं आया, वो उनको गोली मारते हैं और 22 लोग मारे जाते हैं. 22 लोग मारे जाते हैं, उनमें से 19 हिंदू हैं, 3 मुसलमान हैं. 22 people die in this. This is the biggest civil death coming from state action in Trinidad till now. 22 लोग एक साथ गोली कांड में मारे जाते हैं. तो 1840 ये, मगर ये कहानी की बहुत सारी ये हुआ कि एक्सप्लेनेशन काफी है. अभी आजकल मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, मगर आजकल अभी भी ये तो प्रथा तो काफी कम हो गया है. 19th सेंचुरी का 20th सेंचुरी में कम हो गया क्योंकि गवर्नमेंट की बैन के कारण, पर कुछ कुछ छोटे छोटे जगह में ये आजकल फिर रिवाइव हो रहा है. ये ताजिया बनाना, होसे इसको कहते हैं. हाय हसन, हाय हुसैन, हुसैन की जो क्राई होती थी उसको देख के लोग उसका कहते थे होसे होसे होसे. होसे उसका नाम, मुहर्रम का नाम होसे हो गया. तो यहाँ 22 people died in this thing. So the point, the question that I asked when I was studying, मैं रिसर्च कर रहा था इस जगह, कि क्यों इतना तेजी से लोग मरे, क्यों करे, क्यों, why did they defy it? Is it some kind of a, उनका कोई मतलब मैडनेस था, मॉब की तरह गए? और हम लोग तो आजकल काफी तब तक हम ट्रेंड थे कि टू सी सर्टेन टाइप ऑफ रैशनैलिटी इन कलेक्टिव एक्शन. ये कोई मैडनेस नहीं था, क्या कारण था? तो जो डोमिनेंट जो नैरेटिव था, जो एक्सप्लेनेशन था, ये था कि ये तो वर्कर, ये इंडियंस का कल्चरल और कम्युनिटी एक्सप्रेशन था और उसको दबाया जा रहा था. तो ये वो अपने कम्युनिटी के लिए मारे गए. मगर फिर भी मुझे समझ में नहीं इतना कम्युनिटी का क्या ये है. अब ये क्यों हुआ कि हिंदू जो है 19%, हाउ डिड दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद दिस फेस्टिवल? So both these questions I tried to understand. And then most of the documents of that period tried very much to show that it was due to the arrogance of the workers, that they were becoming the Christian missionaries, the colonial officials, and so on and so forth, including historians. Many historians, they saw it with what I would call cultural lens, that this was about a cultural defiance, which it was perhaps. But what I found, and that's where the final point that I want to make, and what I found by studying was that I saw that most of the reports which were written tried to take away the cultural festival away from the plantation economic context. That means they saw it purely in terms of religion and in terms of culture, religious and mainly religion culture. Whatever they didn't understand, what is Hinduism, Shiism, but they tended to look it away purely as a religious cultural value. So since there was such a overwhelming concentration था कि उसको religion के lens से देखा जाए, I tried to bring it back and see it within the context of the plantation. And what helped me to understand and to make a point was this. I found that this thing happened, this massacre happened in a period in October, between September and October. There were several small strikes which had happened in the plantations around this. क्या प्लांटेशंस में स्टेट में स्ट्राइक्स हुए थे? स्ट्राइक तो वहां मना था, बट छोटे छोटे ग्रुप में लोग जाते रहते थे, जाके वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास कि हमें ये नहीं मिला, हमें ज्यादा काम करा रहे हैं, ये कर रहे हैं. ये मैं देखा कि काफी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में ये है, मगर बहुत छोटे छोटे हो रहे थे. मगर ये 2 महीने में समझिए कि 22-23 ऐसे छोटे छोटे स्ट्राइक की खबर मैं देखा हूँ. तो जिसमें 100, 200, 500 ऐसे लोग काम कर जा रहे थे, और जाते हैं अपना हर काम बंद नहीं करते थे. वो अपना सारा टूल्स लेके जाते थे, क्योंकि अगर काम बंद करोगे तो तुम्हें जेल में डाल देंगे. तो वो कह रहे थे भाई हम अपना काम को लेके ही जा रहे हैं, हमें काम बहुत ज्यादा करा रहे हैं, तो आप आके हमें देखिए. तो इस तरह के स्ट्राइक की बड़ी सारी छोटे छोटे. और ये नहीं, मैं देखा कि इन द लास्ट 2 years
from 1882 to 1884, there was a massive crisis in the sugar industry. Sugar का price world market में आधा हो गया था. उसके कारण जो planters थे बहुत ज़्यादा intensify कर दिए थे काम कराना. उसके कारण मैं देखा कि 82 से शुरू होकर 1882 जब से प्राइस खत्म हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोगों पे काम का प्रेशर पड़ा और लोग इस तरह से उसको रेजिस्ट, छोटा छोटा स्ट्राइक में रेजिस्ट कर. तो मुझे लगा कि ये दोनों में कोई संबंध जरूर है, एंड दैट मस्ट बी ब्रॉट इन. What helped me to bring them in was this, I found that generally the strikes which happened, nearly 54 strikes that happened between 82 and 84, मैं देखा, all happened between September and November. 1881 से लेके 84 के बीच में जब भी स्ट्राइक्स हुए छोटी छोटी, ये महीने में हो रहे हैं, सितंबर टू नवंबर के महीने में, सितंबर एंड से लेके नवंबर. ये पीरियड एक्चुअली एक स्लैक पीरियड है, प्लांटेशंस में काम नहीं होती है, इतना ज्यादा नहीं है, मगर स्ट्राइक्स उसी वक्त ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि इसी वक्त प्लांटर्स चाहते थे कि वर्कर्स का जो काम करने का है उसको बढ़ाएं, क्योंकि अभी तो वो डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जब वो कटाई होता है तब तो काफी डिपेंडेंट रहते हैं कि लेबर आए, लेबर काम करे, मगर उस वक्त उसको वो चाहते थे इसी वक्त हम उनका काम बढ़ा दें ताकि वो रह जाएगा, एक तरह से कस्टमरी बन जाएगा, नेक्स्ट सीजन के लिए भी काम हम ले सकते हैं. तो वर्कर्स काफी स्ट्राइक कर रहे थे. तो हम देखें कि ये क्या हुआ है कि 1855 में 30 साल पहले, देखिए ये जो है ये लूनर कैलेंडर में ताजिया का होता है, तो मुहर्रम जो है लूनर कैलेंडर में, और हर साल अगले साल जब आएगा मुहर्रम, एक 11 दिन पीछे चला जाता है, 354 दिन का आप जानिए लूनर ईयर है. इसलिए आप देखेंगे इस्लामिक कैलेंडर में ये जो है ताजिया या जो कोई भी उनका फंक्शन है, ईद हो, ये वो पीछे 11 दिन पीछे चलता रहता है. और धीरे धीरे ये होते होते ऑलमोस्ट 31 ईयर्स के बाद हम देख रहे हैं कि ये इट हैज रिटर्न डायरेक्टली इनटू द पीरियड. सो अक्टूबर में 1855 में हुआ था, 30-31 साल के बाद फिर से वो सितंबर और अक्टूबर और नवंबर के बीच में आने लग गया. तो ये जो कोइंसिडेंस हुआ कि क्योंकि कभी अगर वो नॉन स्ट्राइक्स, मैं उसको बोला कि एक स्ट्राइक सीजन के अंदर 30 इयर्स के बाद एक तरह की कोइंसिडेंस हुआ, और इस कोइंसिडेंस के कारण ये दो तरीका के जो प्रोसेस थे, एक तरफ कम्युनिटी डिफायंस और एक तरफ क्लास के डिफायंस. क्लास मतलब अपने इकोनॉमिक रीजंस एंड रिलीजियस रीजंस could combine together. The fact that the procession, that this Jose procession now reflected not just community identity but magnified the class identity of the workers. This combination of class and community identity, which you will see in many ways today, for instance, farmers' agitation, you'd see this community and class identities getting combined together. If we study their patterns very well, you would find this kind of. So the fact is that these workers who were in a very, very wretched condition, had very little possibility of resistance, collectively utilized the community festival in order to reflect or in order to do their class grievances, in order to amplify and show up their class. And it was this combination which basically in a way जैसे resonate करता है, दो processes बढ़ गया. And that is why it became such an intense warfare, class warfare, that people were willing to die, not only to protect their community identity, but to put forward their class identity also. तो ये जो combination हमने देखा, ये कारण जो है दो तरह की coincidences से पैदा हुआ. एक तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस का कोइंसिडेंस है कि इसी समय कम्युनिटी आइडेंटिटी, कम्युनिटी फेस्टिवल आने लग गए इसमें, और जो एक्चुअली जो स्ट्राइक सीजन में मुहर्रम का, ताजिया का आना. तो ये हम through this my study was perhaps quite unique in that, because it went against the grain of the normal historical analysis which was going on in that place, which either looked at it as purely as a cultural resistance, but I showed why this cultural resistance became such an important thing, that people are willing to die for a festival which is, which is not there in some sense, religious sense,
but actually reflected their class identity and community identity together. Now, this was made possible, ye ban saka, because of the coincidence of the timing of the festival. So, in ये जो दोनों कहानियां मैंने बताई, कैप्टन कुक की और मेरा स्टडी, दोनों में कोइंसिडेंस होता है, बट एक में अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस है और मेरे में एक तरह के, यह भी एक अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस है. यू कैन से इट इज अनफॉर्चुनेट बिकॉज़ पीपल्स लाइव्स आर लॉस्ट, बट it actually explains. I thought it could, we could, the meanings which you can, how people act, उनकी जो meaning, जो event हुआ उसका meaning क्या है, ये अगर हम इसको इस तरह से स्टडी करें, इसकी जो दोनों कोइंसिडेंसेस को स्टडी करें, शायद वो मीनिंग हमें ज्यादा अच्छा से मिलता है. So I want to end here by just reiterating that methodologically we must understand how we can utilize, how do you understand how facts produce meaning. Mere stringing together a fact does not produce meaning. We have to find a frame or a way in which we can bring together and produce this meaning. And in this, I borrow that it is important both to understand the macro or structural features as well as the contingent and the conjunctural features. And coincidence, juxtaposition sometimes provide you meaning which is not possible or not possible to be understood only from one fact. If you mix together or bring together two sets of facts which seem to be something different from each other, but when they are put together, we can derive a excessive meaning. This is what is meant by a serendipity, excess meaning which can come, and which we find historians using this. So I end by saying that हमें Captain Grant मिले कि नहीं मिले, historian will keep on looking for Captain Grant. Unfortunate है कि इस story में Captain Grant तो मिल गए ultimately, तो story के लिए तो ये happy ending हो गया. But historians do not always have a happy ending, because the people whom you are looking for, or they are already dead in the past, or the event that has already occurred. In a way, you feel that it has. But we still are forced in a way to look out for, create meanings. We are condemned to create meanings, but the methods which I have tried to put forward, being an outsider, I know that is to provide, not to look at only the typical, but also the exceptional. The exceptional, the contingent, the unique can also give you a lot of, but in order to derive from the unique the possibility of general understanding, we need to use intuitive, what I call ideas of coincidences, conjuncture, and conjecture. Thank you very much. So thank you, sir. Now the house is open for question answer session. ये स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है उसको हटा दो. Sir, okay. Your screen sharing is paused. So questions, Jasser, you share बंद हो गया? Yes, sir. Okay. So SM Jasser is want to ask some question. Yes. Yes, Shailendra, बोलिए. Hello. So, Abhishek, please unmute. आप म्यूटेड है भाई, उसको अनम्यूट करो. वो अनम्यूट है सर, पूछ सकते हैं. Yeah, Abhishek. Sir. So, झासा अनम्यूट करिए अपने आप को. शायद वो साउंड बढ़ाना पड़ेगा शायद. नहीं. शैलेंद्र उसको साउंड को बढ़ाइए. म्यूटेड है, आप म्यूटेड है. म्यूट कहाँ है? नीचे होगा ना, साइड में होगा म्यूट.
म्यूट किया हुआ है, जरा देखिए। उनके लैपटॉप में वॉल्यूम का इशू आ रहा होगा। अरे अभिषेक, इसको अनम्यूट करो यार। Abhishek, please unmute. Doesn't matter. He can write it. शैलेंद्र को बोलिए लिख देंगे तो I will. If there's a problem. Then write in the chat box your question. Sir is unmuted. He is not able to speak. Most probably there's a laptop error or something. Yeah. So he has to go back. Someone wrote फिर से connect करने को बोलिए. Leave and come back. Sir, he put a question in a WhatsApp group. I just read it. Yes. बताइए. कहाँ है? Let me see, sir. No, sir. In the meantime, you can take other questions also. Yeah, Yes. other questions, anyone? Yeah. Sir, should I read? Yeah, you can. Is he highlighting Anal school of history writing facts or not sacrosanct? कौन बोल रहे हैं? अच्छा. Rajiv is speaking, sir. Okay, Rajiv. Sir, Jha sir put a question in the history group. Is he अच्छा. highlighting Anal school of history writing? अनाल स्कूल के काफी ऑफ कोर्स अनाल स्कूल के काफी आपको लग रहा होगा इन्फ्लुएंस, बट यूजुअली अनाल स्कूल जो है दो भाग में है. पहले झा जी जानते हैं, पहले तो सीरियल क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक हिस्ट्री ज्यादा होता था, फिर वो मेंटालिटी की हिस्ट्री में आए, और वो दोनों दो फेज है अनाल स्कूल में. तो अनाल स्कूल में तो हम लोग सब प्रभावित है. हम लोग तो फर्नांड ब्रोदेल का काफी आइडिया से मैं स्पेशली बहुत ही ज्यादा फर्नांड ब्रोदेल का आइडिया में प्रभावित. बट फर्नांड ब्रोदेल में ब्रोदेल का जो, इफ यू टेक दैट एज अ मेजर थिंग, फॉर हिम द इवेंट वाज नॉट इम्पोर्टेंट. इवेंट वाज वो इवेंट जो है उसको वो समझते थे जो डीप हिस्ट्री है, लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है, वो इम्पोर्टेंट है, और वो इवेंट को वो कम मानते थे. मगर उन्हीं के स्कूल में दूसरे लोग जो है वो इवेंट को स्ट्रक्चर के साथ मिला के काफी अच्छा काम किए थे. मार्क ब्लॉक का खुद काम जो था पहले का बहुत ही असाधारण वर्क था. लुसिया फैब्र का भी बहुत अच्छा हम लोग का ये तो वी आर ऑल. But I actually do not follow specifically when I was talking that I was not following the structural, purely structural expression. I was actually trying to create a understanding. I'm not saying that everyone should do exactly this और सब हर वक्त ऐसे ही होना चाहिए, but इतिहासकार का किस तरह से meanings निकालते हैं, कैसे develop करते हैं, at least one becomes self-aware of it. कभी कभी जो मैं कहा कॉन्टिंजेंसी या ये इसका फिलोसफिकल बेसिस क्या है कि दो चीजों को मिला के आपको नया चीज मिलता है. मैं एक उदाहरण देता हूँ. शायद आप लोगों में बहुत सारे लोग फिल्म देखते हैं, तो रशियन फिल्म मेकर थे, बहुत ही फेमस थे, सर्गेई आइजनस्टाइन का एक थियोरी था. उन्होंने प्रैक्टिस में भी देखा. आई विश आई कुड हैव शोन यू दैट लिटिल बिट. उनका थियरी था मोन्टाज का थियरी का उनका ये था कि देखिए, दो अनरिलेटेड चीज को आप कभी कभी अगर पास ले आते हैं तो एक थर्ड मीनिंग निकल के आता है, जो मीनिंग नाइदर एक में है ना दूसरे में है. ओके, सो ये थर्ड मीनिंग निकल के आता है. मोन्टाज में उनकी फिल्म, आपको बहुत फेमस फिल्म्स हैं, बैटलशिप पोटेमकिन, अक्टूबर, स्ट्राइक, इस तरह की सोवियत रशिया के फिल्म मेकर थे और बहुत ही शानदार फिल्म थे. उसमें उन्होंने ये थियरी को यूज किया था कि एक चीज आ रही है, दूसरी चीज जो कि अलग है, इन दोनों को आप दो इमेजेस को अगर एक साथ लगेंगे तो तीसरा इमेज आपको तीसरा जो आइडिया आएगा, जो फीलिंग्स आएंगी वो ये दोनों चीज में नहीं होंगी. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग. सो मोन्टाज इज आई कैन से मोन्टाज इज माय इंस्पिरेशन टू एन एक्सटेंट. मोन्टाज टू पुट टुगेदर ये लगेगा कि जैसे देखेंगे कोई भी कुछ कर सकता है, मतलब एज इफ यू कैन डू एवरीथिंग और पुट टुगेदर एनी टू फेनोमेनन्स टुगेदर एंड यू विल हैव. ऐसे नहीं है. ये बहुत ही हाईली हिस्टोरियंस जो भी ट्रेनिंग में समझता हूँ जो है, काफी कंट्रोल्ड तरीका से ये किया जाना चाहिए. वैसे फिल्म मेकर भी बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से उसको लाना चाहिए. क्या कंट्रोल्स हैं? आप ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल सकते, दो चीज और तीसरा चीज आपको मिल जाएगा, कभी नहीं होगा.
वो the same protocol जो है, हमें जो वेरिफिकेटरी प्रोटोकॉल्स है कि हम कोई पूरा गलत बात, कोई गलत फैक्ट है उसको दूसरे फैक्ट के साथ मिल जाएगा तो तीसरा अच्छा, ऐसे नहीं हो सकता है. We have to use the same protocols in order to discover hypothesis. और एक दूसरा, शैलेंद्र जी, मैं दूसरा एक थियरी बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं काफी उससे प्रभावित हुआ हूँ, चार्ल्स पर्स करके. चार्ल्स पर्स एक अमेरिकन 19th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी के थे, वो थे फिलोसोफर. तो उन्होंने एक आइडिया दिया था जिसको कि ये अपना कार्लो गिन्सबर्ग भी यूज किए हैं अपने ये आर्टिकल में, और उसका जो आइडिया है काफी लोगों में, ये मैं जिनको देखा हूँ वो लोग काफी इसको यूज किए हैं. वो चार्ल्स पर्स का वो आइडिया है. देखिए, इंडक्शन और डिडक्शन, मैंने बोला 2 तरीके की रीजनिंग होती है. उनका एक थर्ड आइडिया था जिसका नाम था एबडक्शन. Abduction is the word which is exactly like kidnapping. We kidnap meaning. We take away meaning from there. We kind of grab meaning from this. This abduction is a process, or abduction is something which provides, according to Peirce, जो 2 चीज इंडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव रीजनिंग में नहीं मिलती है, वो एबडक्टिव रीजनिंग में मिल सकती है, कि एक नया चीज निकल के आ सकता है. So it is not, and he used it not only to hypothesis generate करने के लिए, कि hypothesis कैसे generate करें, क्योंकि आपके साथ आप बहुत सारे facts देखते हैं, आपके पास कुछ रिपोर्ट आ गया, ये है, ये हिस्टोरियन का, हमारा, मैं कह रहा हूँ मॉडर्न हिस्टोरियन का, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट तो अलग तरीका से देखते हैं, उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल होता है. मगर ये मटेरियल को देखे कैसे, हम देखते हैं, उस पर हम एक लगाते हैं. तो इसी जो हाइपोथेसिस जनरेशन में पर्स की आइडिया काफी इंपॉर्टेंट है. नॉट जस्ट इन हाइपोथेसिस जनरेशन, बट इसकी इन्फरेंस, फाइनल इन्फरेंस ड्रॉ करने में भी जो नयापन वो कह रहे थे कि पर्स की हम कैसे कह सकते. ये पुराना फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है. डेविड ह्यूम ने पहले दिखाया था कि बहुत सारे फैक्ट से आप कोई इन्फरेंस, आपका जो इन्फरेंस है वो अनसर्टन रहेगा. जैसे अगर आप फैक्ट से निकालते हैं तो ये अनसर्टन, इट विल बी ऑलवेज बी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम रहेगा. डेविड ह्यूम 18th सेंचुरी में ये बात कह चुके थे, मगर बहुत सारे फिलोसोफर्स ने इस पे काम किया है. और अब ये है कि हमें इंस्टेड ऑफ हैविंग सर्टेनिटी, एकदम सर्टेन चीज है, उसकी जगह ए मोर प्रोबेबिलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हैज कम. प्रोबेबिलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, और ये प्रोबेबिलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अब नेचुरल साइंस में आ गया, फिजिक्स में तो बहुत स्ट्रांगली आया था 1920s 30s में. और ये जब आया प्रोबेबिलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, इसको हम देखते हैं हाउ इट हैज आल्सो अफेक्टेड आवर वे ऑफ. सो इट हैज आल्सो इन अ वे we can live with different types of interpretations and not look absolutely yahi cheez, inference is the only one, but yet we are not totally kind of. So how do we take out meaning from the facts that we have put together? Okay, and abductive reasoning, there's वो काफी ये है, मैं वो और मोन्टाज, ये 2 चीज को मैं मेरे तरफ से एक नया खोज निकालने में, by using older material but getting a new inferences, I found it useful. मुझे काफी useful लगा. Sir, now Vishwajit Mohanty sir want to ask, sir. Okay. Sir, yeah. Mohanty sir, you can unmute yourself, sir. Shailendra, I don't know whether Shailendra is okay with this. Shailendra, if you are okay with it, just say yes. लिख दीजिए yes. I think it's okay. Yeah, good afternoon. Hello, this is a very hi. interesting talk. Yeah. I loved it because the interpretative reasoning is an important tool for not only for history but also for political science. My question is this: that when you take out meaning of because you are dwelling in hermeneutic and Wittgenstein's linguistic philosophy, then if you look at those combination of words, sentences, and structural connection between concepts, you would find that the meaning comes out differently if the meaning lies outside you, right? And when it comes to a subjectivity of meaning, then
then you have a different meaning. So how do you relate this objective meaning lying outside you within a web of meanings, and then there is something subjective which may not be part of that outside world but has a meaning. So how do you understand these two meanings and relate it to history when you are interpreting whether it is conjecture, or the conjecture, or coincidence? Right. I think I get. I think that's a basic question. But where does meaning lie actually? Is it kind of it adheres to fact? जैसे कि चिपक तथ्य के साथ चिपका हुआ है क्या? जो समझ जो है, I don't know what meaning is. Meaning का हिंदी क्या है? मतलब जो है, हाँ? अर्थ और जो फैक्ट है, जो फैक्ट या तथ्य है, तथ्य अर्थ क्या दोनों चिपके हुए हैं क्या? ऐसे नहीं है, तथ्य और अर्थ चिपके नहीं रहते. तो इसीलिए तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है कि कैन वी डिराइव if it is subjective, if it is purely my subjective thing, then it is your meaning versus my meaning. ये एक तरह से very, I'm taking it very simplistically, but Biswajit is asking a more kind of important question, but I take it. Ki meaning is just an arbitrary thing, a purely arbitrary thing. It is based on someone's idea, maybe it's a Western power or whatever, कोई बड़ा theoretician, उसी का idea से हमें meaning मिला. ऐसा नहीं है. मैं उसी चीज को बोलना चाहता था कि तथ्य और उसका अर्थ जो है ये अलग है. पहला बात है, अलग है, मगर तथ्य से अर्थ का जो रास्ता है उसके पीछे खाई है. There is a kind of a gap, a inferential gap. The point is we have to cross that gap. But हम जब gap cross कर रहे हैं, इसका मतलब एक तथ्य या सीरीज ऑफ तथ्य का क्या एक ही अर्थ है? ये पहला बात है. अर्थ एक नहीं है. ठीक है. तो मैं अभी बता रहा हूं स्कीमेटिकली कि तथ्य और अर्थ एक तरफ है, इसके बीच में खाई है. आप उसको जंप करना चाहिए. इसकी जंप या इसकी छलांग जो लगाते हैं, जो लीप ऑफ फेथ वी टेक इन ऑर्डर टू डिराइव मीनिंग, फर्स्ट मस्ट है कि मैं पहुंच गया वहां, मगर पता चला कि अर्थ को कहीं और चला गया. भाई मैं तो वहां पहुंच गया, अर्थ वहां चला गया. But that will happen. That is the danger of inquiry. So how do we contain that meaning? How do we contain it? How do we assess it? Assess करना है. हम जब jump करके खाली मेरा jump से ही meaning का value नहीं पता चलता है. So in a way, I was just saying that कि आप लोग हम लोग सारे social scientists or historians, we have to use our methods of assessing and using the protocols. I don't say methods, let's call it protocols. That you follow certain procedures and protocols in order to contain it in a way कि यहाँ से एकदम भाग के दूसरी जगह ना चला जाए. हाँ, कि कहीं भी चला गया. So ये जो लिमिट करना है, उसको मीनिंग्स को लिमिट करना है, और उसको मीनिंग क्यों आप लिमिट, किस तरह से लिमिट कर रहे हैं उसको आप पता. ये देखिए, ये हम इस तरह से इस मीनिंग्स को लिमिट कर रहे हैं. फिर भी हमें we will never be certain, but we will at least have a control over the derivation. We can't allow कि जो भी तुम derive करना चाहो derive करो. ये तो this is a very important point, extremely important. But Biswajit, I'm sorry, I want to say history is a knowledge system. We call it episteme. It is an episteme. As opposed to doxa. Doxa मतलब opinion. आपका opinion कुछ भी हो सके. ये नहीं है. History is a knowledge system. It is an epistemic question. How do you derive? How do you control that meaning? How do you control that meaning? And we have some procedures. There are many procedures, not one. The procedure starts from when you select facts, when you put the facts together. आप ये procedure में जो बात बोल रहा हूँ, विश्वजीत, you see it in judicial proceedings. Judicial proceedings में आप कुछ भी नहीं डाल सकते. You have to have fact, you have to have relevant fact, you have to connect each fact together from the cause to the effect. There should be clear-cut connections. Okay, only then you can say, okay, now this becomes something. So that is done through a very, very rigid protocol of judiciary. You know, judiciary, you have to, at each point, you have to generate link between the facts, and you have to assess what is relevant at each point. ये जो है 1800
1871 में इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा गया था, उसको जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ने लिखा. इट्स अ वंडरफुल थिंग जस्ट टू रीड द ओरिजिनल इंडियन एविडेंस एक्ट. उसमें फैक्ट क्या है, रेलिवेंट फैक्ट क्या है, क्या उससे इन्फरेंस क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, ये पूरा उन्होंने एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है. इट्स आई एम नॉट सेइंग द हिस्टोरियंस will not, it will not allow us to the way the intuitive thing I am saying, but you know that protocols are quite important in containing the meaning, keeping it within a certain limit, so that कि आप ये कुछ भी उल्टा पुल्टा ऐसे नहीं हो सकता है. शैलेंद्र, आप you agree with me or not? So, sir, now another question in the chat box, sir. 1885 का Trident का Muharram का massacre. Somebody has raised hand by. Yeah. Sir, Tejmal, you can unmute yourself and ask question. Yeah. Shrikant, sir. Yeah, Tejmal, you can ask. Good afternoon, sir. Yeah. Hello Tejmal, hi. Yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि मीनिंग मतलब हम जब खोज रहे होते हैं तो कई बार ये डेंजर होता है कि असल चीज जो हम मतलब जिस जगह पहुंचना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाती. तो ये वाले प्रोसेस में सर कई बार हिस्टोरियन जनरलाइजेशन कर देता है, लाइक कि बहुत दूर पास्ट में कुछ है और हमें कोई एक एविडेंस मिला, जैसे आपने वो कैमल वाला स्टोरी बताया कि एक आंख से देखा है तो मतलब एक आंख खराब हो क्योंकि एक साइड से देख रहा है, एक पैर से, जैसे वही वाला जो मतलब ये जो बोलता है मतलब आर्ट हिस्ट्री में बोलता है हिस्टोरियन का कि जैसे हाथी का किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ा, जो लगा उसके अंदाजे से उसके अकॉर्डिंग सेम चीज आप. यस सर. तेजमल, ये जो दोनों एग्जांपल एक दूसरे के ऑपोजिट, ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, एंड ये जो स्टोरी है दोनों ऑपोजिट. तो वो उसी में वो उसी को पकड़ के देख रहा है ना, ही इज डिड्यूसिंग फ्रॉम देयर. दैट्स डिडक्टिव रीजनिंग. दिस इज व्हाट वी कैन से आर कंजेक्चरल रीजनिंग. ये अलग है, बट दे लुक सेम बट दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, है ना तेजमल? दे आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर. कि मैं हाथी का पैर पकड़ा हूं एंड इट अपीयर्स दैट ये पिलर है, मैं बोला ये घर है. आई एम डिड्यूसिंग फ्रॉम वेरी सेंसरी एम्पिरिकल वे. हाँ, while here एक बड़ा सा जो चेंज हुआ है ये है कि from a limited amount we are trying to generate a inference, a larger inference. हाँ, आप पूछिए, बताइए तेजमल क्या करेगी? यस सर. तो सर उसमें मतलब हम जनरलाइजेशन से कैसे बच सकते हैं? कई बार ऐसे मतलब जनरलाइजेशन बचने की क्यों जरूरत है? जनरलाइजेशन नेसेसरी है. यू हैव टू जनरलाइज कर सकते हो. इज इट अ वैलिड जनरलाइजेशन और नॉट? Is it a invalid generalization? Those are the things that we can ask. That's what I meant, that you use protocols for generalize. Now, हम जो कह रहे हैं वो थोड़ा generalization भी से थोड़ा अलग है. हाँ, but you are right. Generalization, कुछ भी generalize करना is not possible. That is not what is meant by that. You know, you generalize with a certain amount of, as I was telling earlier, कि generalization का तो but please understand, we have to generalize. We can't say कि भाई मेरे गांव में ही ऐसे होता है, दूसरे गांव में ना हो, मेरे गांव में होता है. You know, that becomes like the blind man holding the thing. पूंछ पकड़ के बैठा है, वो कह रहा है कि मेरे गांव में तो यही है, पूंछ जो है ना सांप है, तो ये सांप है. So we have to generalize. We have to generalize to create a image of. You can generalize invalid way, valid way, but मेरा जो reasoning है वो थोड़ा अलग है जनरलाइजेशन से. मैं कह रहा ना, इंडक्शन नहीं है, ये एब्डक्शन की तरफ जा रहा है. एब्डक्शन, यू टेक अवे मोर देन व्हाट कैन बी गिवन फ्रॉम द वैलिड जनरलाइजेशन. यू कैन जनरेट मोर सेरेंडिपिटस मीनिंग कैन कम आउट ऑफ दैट. दैट्स व्हाट आई थिंक आई मीन बाय दैट. सॉरी तेजमल, आई एम सॉरी. Will I do not know whether I have answered your question. Yes sir, thank you sir. Okay. Sir, there is a question in the chat box by Shrikant, sir. श्रीकांत क्या लिखे हैं? श्रीकांत, 1885 ट्रिनिडाड के मुहर्रम के मासे रिसर्च को आपने कैसे किया? किसी इवेंट को अराउंड के फैक्टर को वाइड परस्पेक्टिव कैसे देखें? हाँ, अच्छा, ट्रू. मैं काफी दिन से इस पे काम कर रहा हूँ. 1995 जैसे मैंने पीएचडी खत्म किया, उसके 92-93 से मैं काम कर रहा था.
और मेरा पहला काम मैं माइग्रेशन पे काम किया था, असम के माइग्रेशन पे। तो आर्काइव्स में ये भी अगर देखिए, ये इसको कहते हैं सेरेंडिपिटी। आर्काइव्स में, नेशनल आर्काइव्स में मैं कुछ काम कर रहा था इसके ऊपर। तो हमें माइग्रेशन जो है वो आपको मिलता है रेवेन्यू एंड इमिग्रेशन प्रोसीडिंग्स में होता है, रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स में हमें मिलता है। तो मैं उसको देखता रहा तो हर वक्त, मैं तो असम पे काम कर रहा हूँ, मगर एक चीज मुझे मिलने लगा कि बहुत सारे औरतों को वहां कत्ल कर दिया, वाइफ मर्डर्स, women were murdered quite a lot in West Indies. Indian women were getting murdered. So I said कि ठीक है, ये मैं खत्म, क्या है ये? एक छोटा सा फाइल मिला, मैं पहले उसको देखा. So then, like historians do, we start from I couldn't place the meaning, but then I started putting them together. I said, ये क्या है? Why is it happening? Then I found that the officials themselves were trying to explain why was there more murder of women in India or in West Indies compared to India. They did a lot of statistics of women murder and found that in about 140 times more rate of murder of women was happening in West Indies. तो काफी उसके बाद I started looking at, and then I first research I did was to again to locate the women murder phenomenon, which it was a social phenomenon. It was something about which officials were worried about. They generated facts, they generated numbers. Every year कितने औरतों को मारा गया, उसके हस्बैंड ने, और सो कॉल्ड हस्बैंड मारा है कितना, हर रोज हर साल आता था रिपोर्ट्स में. तो मैं बोला ये क्या है, हाउ डिड दिस बिकम अ फेनोमेनन. तो इसको हम फिर उसको पढ़े और उसको हम exactly like what I did with this, to embed that or to bring it back to the context in which it was happening. I found that the colonial officials were decontextualizing. क्योंकि ये इंडियन लोगों में ऐसे है, ये लोग ना अपने औरतों को ऐसे बिहेव करते हैं, मार देते हैं करके, वो अपने गांव में ऐसे करते हैं. फिर जब गांव में गए देखने के लिए, देखा भाई इतना तो औरतों को नहीं मार रहे, मारते हैं मगर इतना, मतलब 1 लाख में एक औरत, तब पता नहीं क्या था, एक 10,000 में एक औरत मरती थी, सपोज मर्डर होता था. यहाँ तो 140-150 लोग मर रहे हैं, औरतें मर रहे रेट में. तो ये, so I try to bring it back to the context of the plantation. So that is because I'm a labor historian, so I also try to connect this psychological social phenomenon in the labor context and showed and tried to bring it. And this is while doing research on this, I started looking at it. So I wrote first about this wife murder ka karan kya hai. Was it due to sexual jealousy? Was it due to so I showed that this murder happened because of the way the plantation economy was changing. The murder or plantation economy, because anyway, it's a slightly complex argument. So I showed the changing nature of wife murder over time was connected to the way the plantation economy itself changed. Yeah, labor system in the plantations changed over time. ये जब देखा मैंने, I could generate certain meanings and inferences about what would have been the cause of these murders, and were they only to be seen as cultural lens, or can we bring in the economic factors in it. So while doing this research, of course, I did a lot of research on family formation, on and while doing this, of course, this was a big report came out when this murder happened. So I started reading this report, and that's how I began this research and became interested in locating cultural, psychological, and social institutional forms in kind of, and bringing, when you bring them back and just like juxtapose them, ले आते हैं आपको इस, but you know, when you have to find the context carefully. किस context में, मतलब उसी context, आप कहेंगे ये labor system के कारण लोग मार रहे हैं, ऐसे नहीं. You have to find a relevant fit between your जो आप context design कर रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनका फिटिंग जरूरी है. बट इस फिटिंग में देखिए, जैसे वो क्या कहता है ना, कैप्टन ग्रांट के चिल्ड्रन, दे ट्राई टू फिट अ थियरी, बट दे डिडंट फाइंड कैप्टन ग्रांट. वैसे ही हम खाली फिटिंग से नहीं हो जाएगा, पर फिटिंग जरूरी है. फिटिंग करने के बाद देन वी फाइंड हाउ बेस्ट, आर देयर ऑल्टरनेटिव
possibilities. And then we have to assess which is the alternative fitting that we can apply. And my feeling is that bringing sometimes two unexpected or unusual processes, if you bring them together, काफी interesting मिलता है. मैं statistics में काफी, मेरा PhD थी, काफी statistics यूज करता था. मैं correlation के बारे में काफी जानता हूँ. मतलब at least I was trained to do a lot of economic history with correlations. But I know that lot of correlations are called spurious correlation. आप आकाश में चांद और चांद का रेट और देखेंगे अंदर, suppose if you connect them, sometime you will find a correlation. That correlation is a spurious correlation because you need a proper way by which you have to assess the validity of these two processes and their connections between them. What is the connection between testimony and proof in historical studies? Testimony and proof. Yes, well, a testimony is a kind of a proof, but not necessarily. आप सब शायद उसके पढ़े हैं, शाहिद अमीन के बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट मेटाफर, वो अगर पढ़े हैं तो उसमें वो अप्रूवर्स टेस्टिमनी दिखाया है. बहुत ही अच्छा एनालिसिस है शाहिद, प्रोफेसर शाहिद अमीन के. तो उसमें टेस्टिमनी cannot testimony itself is an object of study, but and it is utilized as a proof, like a witness का बोलना, but that doesn't always is a proof, or isn't becomes a valid proof. So testimony is a type of proof, but testimony is not all proof. That's the first distinction between testimony and proof. But testimony is linked to proof as a form. Now, testimony is obviously a kind of a account of a human being or a living person, while proofs can be of material, non-living things, objects. Those can be also utilized as proofs. Testimony is a form, let's say, so there is distinction between proof and testimony. Testimony can become a form of proof, is a form of proof, but not necessarily. So let's call it not all proofs are testimonies. Okay, all testimonies can be proofs. Shrikant, you are raising your hand. Shrikant, you can come up with. Abhishek ji, you can unmute Shrikant. Okay, please unmute Shrikant. You want to ask question. हेलो सर. हेलो सर, मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं जो वेस्ट इंडीज और जैसे जगहों पे गए थे, मैंने उन पर एक बुक पढ़ी थी जो अभी हाल ही फिलहाल में आई थी, कुली लाइन्स करके है. तो सर मुझे इस सब्जेक्ट में कुछ और जानना है, तो इस चीज पर कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं? बहुत है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं काफी बता सकता हूँ. मैं तो ईमेल कर दीजिए, मैं लिख के भेजूं. मेरा ईमेल है, मैं लिख रहा हूँ आप प्रभु प्लीज. श्रीकांत, so I can send you, but I can't tell you all the books now, but you can always send a mail to me, and I will be happy to send you some readings and books and all. और सर एक और चीज है, जैसे कि इनको गिरमिटिया मजदूर बोला जाता है. जैसे मैं बनारस का हूँ, तो यहाँ ऐसा गिरमिटिया मजदूर बोला. तो सर अभी भी वहाँ की जो मतलब रूट कॉज है, जैसा सुनने में आता है कि वो लोग अपने मतलब कि रिलीजन को बहुत ही स्ट्रांगली बिहोल्ड करते हैं. सूरीनाम और नीदरलैंड्स में आज भी भोजपुरी बोला जाता है. तो और अच्छे आर्टिस्ट भी वहां से निकले जो तो सर ये अब तक ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग कैसे रह गया? उन्होंने आज तक अपनी संस्कृति को इतने दिनों से बचाया कैसे रखा? मगर हर जगह नहीं बचा पाया ना, हर जगह नहीं हुआ. ट्रिनिडाड में और गयाना में वो खत्म हो गया. सूरीनाम थोड़ा लेट गया था, और स्पेसिफिक एक जगह है सूरीनाम में ज्यादा रहा है,
और मगर गायाना और ट्रिनिडाड में इसकी लैंग्वेज डेथ भी हुआ है। आप एक पेगी मोहन है, उनकी आप पढ़ेंगे, उन्होंने काफी अच्छा लिखा है ट्रिनिडाड की भोजपुरी पर लिखा है, यू नो। बट व्हेन आई वेंट, मैं जब गया तो भोजपुरी तो लोग मतलब बोल सकते थे, बट उनका वो खत्म हो रहा था, काफी खत्म हो गया था। मतलब जैसे हम देखे हैं कि मतलब मैं काफी रिमोट एरिया में भी गया हूँ, तो यूजुअली जितना रिमोट मैंने अवे फ्रॉम द टाउन्स, वहाँ थोड़ा चांस था सर्वाइवल का, टिल द 40s 50s तक चांस था, 60s तक। उसके बाद देयर इज काइंड ऑफ रियल डिक्लाइन ऑफ भोजपुरी वहाँ से, ट्रिनिडाड में और गयाना में भी। बिकॉज और एक है कि इसका जो 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 लेट आए, एक है कि लैंग्वेज कम्युनिटी मस्ट बी कंटिन्यूअसली क्या कहते हैं रिवाइव्ड, मस्ट बी मस्ट बी रीजेनरेटेड, नो, कि ऐसे नहीं कि हम 5 लोग बच गए, फिर 4 हो गए, फिर 3, ऐसे नहीं होगा। 5 रेगुलरली उसको मिलना चाहिए कुछ। तो ये जब इंडेंचर था सिस्टम, तब तो हो रहा था कि हर साल लोग आते थे वहाँ, बट जब से बंद हुआ 1920 के अंत से, तो ये धीरे धीरे उसकी जो है घटने लगा। कुछ नए चीज होने लगे, ऑफ कोर्स नए तरीके के, दूसरे तरीके, उसको हम कहते हैं मिक्स लैंग्वेज। चटनी म्यूजिक आप सुने होंगे ना, चटनी म्यूजिक में वो है काफी उसका प्रभाव रहा है लैंग्वेज में। और ये लैंग्वेज चेंज जो है ना, लैंग्वेज इटसेल्फ इज अ वेरी गुड एविडेंस ऑफ सोशल चेंज। मतलब लैंग्वेज चेंज can tell you about how the social transformation is taking place in this place. I haven't done a great study, but I always thought language was a very good instrument to study this change. मैं इतना अच्छा से उसको नहीं किया हूँ, but this is my broader understanding कि कुछ जगह में, कुछ जगह में, और बहुत जगह पे completely खत्म हो गया है। जैसे आप जाएंगे जैसे फरासी जगह में, जैसे ग्वाडालूप है, जहाँ फ्रेंच मार्टिनिक है, वहां तो है ही नहीं। छोटे छोटे आइलैंड में जहाँ कम लोग गए थे, वहाँ कंप्लीटली भोजपुरी या इंडियन लैंग्वेजेस जो थे वो खत्म हो गए। बट इन सर्टेन लार्ज कम्युनिटीज इट हैज स्टेड। फिजी में भी थोड़ा सा बेटर रहा है। फिजी हैज बेटर बिकॉज फिजी बहुत लेट आया है। फिजी में लोग 1880 के दशक में गए, ये सब ना 1830-40 से गए हैं। वो एक कारण हो सकता है, डिलेड गए हैं तो थोड़ा देर तक उनका रहा है। और उसके बाद और एक चीज है कि वहाँ जो है, जो लैंग्वेज कम्युनिटीज के बीच थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी है बिटवीन ब्लैक पीपल, दैट इज अफ्रीकन डिसेंडेंट्स एंड द इंडियन। दैट इज अ काइंड ऑफ रेगुलर वो है पॉलिटिकल पावर के लिए। आप कभी पढ़े हैं नाइपॉल की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, या नाइपॉल की दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट तो है ही उन दोनों में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी समटाइम हेल्प्स इन प्रिजर्विंग, कि हम प्रिजर्व करेंगे कि कोई हमें अटैक कर रहा है तो हम उसको प्रिजर्व करेंगे। तो ये भी एक प्रोसेस, काउंटर प्रोसेस चल रहा है। और सर एक और क्वेश्चन था, जो आपने जेम्स कुक का जो किलिंग बताया, तो सर वो किलिंग हुआ 1789 में, और फिर आपने जो बताया रिसर्च की जो बुक आई वो 1985 में आया। तो सर ये ऑलमोस्ट 200 साल का डिफरेंस है। और क्या हवाई भी तो अब काफी मॉडर्न हो गया है, तो जो रिसर्च करने वाले थे उन्होंने कैसे ये नोटिस किया होगा कि रिचुअल्स क्या रहे होंगे? और एब्सोल्युटली फैबुलस, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक क्वेश्चन। यही एक्चुअली श्रीकांत आपने बहुत अच्छा किया क्वेश्चन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द डिबेट जो हुआ, जो कंट्रोवर्सी हुआ था उन दोनों के बीच, गणनाथ ओबेसेकेरे और क्या नाम है उनका, मार्शल साइलेंस के बीच जो हुआ था। वो गणनाथ ओबेसेकेरे तो एक चीज बोले कि भाई तुम्हें तो लगता है कि तुम्हारे ये में कोई हवाई जो 1770 में था वो अभी भी है, तो आप कैसे इसको कह सकते हैं? मगर ये मार्शल साइलेंस आई थिंक वाज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर, वो आंसर में स्ट्रॉन्गर थे। मार्शल साइलेंस उनका जो वो एक आप पढ़ेंगे वो ये किताब जो है ना, आइलैंड्स ऑफ हिस्ट्री, उसमें उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग एक है, जो कि हमारे लिए और हिस्टोरियंस के लिए काफी, उनका मेन चीज है चेंज। कैसे चेंज होता है? अगर रिचुअल रिपीट होता है तो रिचुअल में चेंज कैसे आता है? तो उन्होंने मतलब उस वक्त काफी इंपॉर्टेंट था कि वो जो एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो रिप्रोड्यूस होता है,
रिचुअल वही सेम रिप्रोड्यूस होता है, मगर चेंज आता है। अगर आप जानते हैं चेंज कैसे आता है, परफॉर्मेंस के थ्रू। आप एक्ट आउट करते हैं, आप जब एक्ट करते हैं कोई रिचुअल, आप समझते हैं कि भाई हम तो भगवान मतलब श्री कृष्ण के टाइम से वो जो रिचुअल है वही कर रहे हैं। नहीं, यू हैव एवरी टाइम बाय परफॉर्मिंग यू चेंज इट। ये वाले जो परफॉर्मेंस और स्ट्रक्चर के अंदर जो डायलेक्टिकल रिलेशन है, बहुत ही बढ़िया दिखाया। तो उनका आर्ग्यूमेंट है कि इनफैक्ट आई नो द मैकेनिज्म ऑफ चेंज, सो आई कैन रीड कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स जो अभी से 1950s में 60s में जो लोग जाके डिफरेंट पॉलिनेशियन सोसाइटी में काम किए थे, और हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स हैं उसको दोनों को मिला के हम देख रहे हैं। इसमें ये नहीं कि हवाई के लोग अभी कह रहे हैं कि वो मैं भगवान को मानता था, वो भगवान, ये बड़ा सा पॉइंट था कि he said why is it not possible to think, ये क्या नाम है अवश्यकर ने बोले कि देखिए हम तो कभी इंडिया में, हम इंडिया या श्रीलंका में तो हम तो कभी भगवान नहीं मानते थे गोरों को, तो आप लोग ये क्यों सोचते हैं कि हर गोरों को हो। एक्चुअली ही सेड कि तुम श्रीलंका में नहीं होगा, मगर मैं तो दिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो भी एविडेंस मेरे पास है उससे लग रहा है कि वो और एटलीस्ट जो लोग देख रहे हैं कि वो तो मस्त होकर उनको जो भगवान वगवान जब पानी वानी फेंके वो तो खुश रहे थे। मिस्टर कुक तो बहुत ही खुश थे और ही वॉज वेरी हैप्पी बीइंग गॉड फॉर सम टाइम। तो he himself was feeling like God. He was happily participating, and others were also others who watched him also did write a little bit about that. So इनका था question था कि do you think that what did the natives actually think? इसी बात पर उन्होंने किताब लिखा पूरा, मार्शल शालिन से पूरा किताब लिखा गणनाथ ओबीसी के खिलाफ कि व्हाट डू द नेटिव्स थिंक, फॉर इंस्टेंस कैप्टन कुक, क्या अबाउट कैप्टन कुक। ये पूरी किताब है और काफी डिटेल में उन्होंने दिखाया कि कैसे ये रिचुअल स्ट्रक्चर जो है उसको उसकी कहाँ हम देखते हैं और कैसे उसका अंदर चेंज आता है। वो काफी अच्छा तरीके से आंसर किया। मैं जबकि गणनाथ ओबीसी बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनको ये करता हूँ। मैं शालिन्स का मैं सोचता हूँ शालिन्स वाज राइट, शालिन्स राइट, बिकॉज आई personally feel people can feel like God at some point and not feel like God at some point. अब भी हम जानते हैं some people have made God for some time, कुछ देर। मैं जानता हूँ कि जैसे कभी कभी रिचुअल सैक्रिफाइस भी होता है, उनको गॉड बना देते हैं फिर उसको सैक्रिफाइस भी कर देते हैं। तो ये भी ऐसे जैसे अमंग द कोन्स, यहाँ में मैं पढ़ा हूँ 1830s में जो अकाउंट आए थे कोन्स ऑफ उड़ीसा के, तो वो तो जो जिसको रिचुअल सैक्रिफाइस करते थे उसको तो भगवान की तरह उसको पूरा करते थे। वो एक साल वो भगवान की तरह रहता था फिर उसको सैक्रिफाइस करते थे। तो ये देयर आर सम reasons why I felt he was right. I find many influence of ancient writing. Yeah, there is a question from Preeti ma'am, sir. Preeti ma'am? Yeah, in the chat box, sir. कौन है भाई? Yeah, Preeti, you can see. Preeti David. कौन प्रीति मैम है ये? Yeah, I think. Okay. Correlation is not necessarily. Oh wow, अच्छा. So how do historians examine correlation between events and processes and create causality? That's important. Even in statistical, this is Preeti. You're right. We put correlations together, and we have to make sure, just like any statistician, that it's not a spurious correlation. So उसका जो टेस्ट होता है कि those are मतलब ये नहीं कि एक प्रोसेस उसी के अंदर ही दूसरा प्रोसेस है, हम दोनों को अलग करके देखते भाई ये तो बड़ा अच्छा उनका फिटिंग हो रहा है। Maybe they are not independent of each other. Correlation is always good. You validate correlation if the variables or the processes are independent of them. There are tests for independence, and then there are this tests for autocorrelation. That means कोई series अपने आप को अंदर ही it is self correlated, and that is also sometimes you have to take it out. But statistical studies have shown it. Historians, of course, we are looking for certain types of provisional causality. Let's say provisional causality. We would say that if these two phenomena happen together, it would appear probable that they are connected to each other. They happen to act together. So certain types of causalities have to be
to be like provisional causalities can be there. Not all correlations, as I said, you have to test for independence. You have to test for there are many statistical tests also for instance lead and lagging. कोई चीज पहले हुआ है उसके बाद दूसरा चीज हुआ तो we say that is possible that कि उनमें एक causation हो सकता है. Lead and lag analysis है. There are many other so there is in statistics there is a thing called Granger Causality which does this. So economists and they do it by looking at lead lag variables. Price पहले है उसके बाद से migration. Let's say अगर प्राइस बढ़ गया तो लोग माइग्रेट कर रहे हैं. तो ये अगर हम देखेंगे कि प्राइस इस साल बढ़ा अगले साल माइग्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब एक कॉजेशन है इसमें. But we can generate that causation. It may not be there. It may not be there because we also know a third thing, that between two correlated variables or processes, there could be an invisible third thing, which is actually causing both these. Instead of A and D being A causing B, there could be a C which causes E and causes B. So we have to also then look out for these invisible causalities or invisible factors also in some sense. That's why in all forms of historical writing and understanding, two things are quite crucial. जो एक theory हम लगाते हैं उसका opposite भी हमें रखना चाहिए. We should test our theory against another theory which would explain it. So we जो counter evidence नहीं लाके अपने खाली अपना ही evidence डाले जाते हैं उसको हम कहते हैं cherry picking. You only choose your evidence according to your what suits you. So you'll find strong causality because you have only chosen those variables or those factors. We need to have something. How to test that? We need to have something counter to it and say कि अच्छा ये देखा हमने कि ये वाली theory से नहीं होता है. उसका मतलब है most probably ये वाली theory से होगा. If you don't do it, at least in your mind, if it is not there, you will tend to reproduce what is called confirmation bias. You confirm your biases. This is a well-known thing happens to statisticians, economists, social scientists. We all the time confirm our biases. We have to continuously test against that also. Preeti, is it okay? She can write, sir. Sir, last question from Prerna Khanna. You can Abhishek unmute. Prerna? Yeah. Yes. Yeah. Am I audible now? Yeah. Yes. Yes, good afternoon, sir. This side, Srishti. I log in with my sister's ID. Thank you for such an interesting talk. My question is that you have said about the facts and the strings of facts do not lead to the meaning directly, but they are very much important. So I wanted to ask you, how can we ensure that the facts are to be right so that we can derive a right meaning? And then how can we ensure that the meaning that we have derived are now right, are on the right track? This is my question. Thank you for the interesting talk, sir. Yeah, Prerna. Yeah, well, I suppose that's what you do. Yes. That's what we do is the fact. I said, look, fact or meaning के बीच मैं कहा खाई है. There's a huge खाई. We need mediation. There's a very well-known concept called mediation. Mediate between fact and meaning. What are the mediating factors between fact and meaning? That means sometimes there is another fact or there is a provisional meaning. There could be any different inferences between a particular or inference that you get and the fact. We need to look at the mediations which are there. What mediations can we generate? एक तो है. दूसरा है आप जो पूछे कि facts को हम कैसे जाने. We have a test for relevancy. You can't put all facts. कोई भी चीज का किसी का murder हो गया आप वो Suryast may be a factor, but Suryast hua. There are so many facts which have happened. We have to choose. We have to use some assessment. What could be relevant? What could be relevancy? Relevancy is a very big in choosing a fact. In order to explain or in order to bring out the explanation for a certain type of phenomenon. ये है relevancy का test है. दूसरा है. Sometimes you might just put them and see that if you rearrange the facts, we get different type of meanings. Rearrange the clusters, we can find different types of meaning. And so we have to try out different mechanisms or different configuration of these facts.
टू गिव एन एग्जांपल, सपोज हम देख रहे हैं प्राइसेस, जब मैं प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, सॉरी आई एम एन इकोनॉमिक हिस्टोरियन, सो काफी ऐसे आता है, मैं जब देखा था, देखिए प्राइसेस बढ़ रहे हैं और या रेनफॉल, वो रेनफॉल का सबसे अच्छा है, रेनफॉल हो रहा है और ये सपोज माइग्रेशन हो रहा है, हम देखते हैं कि अगर ड्राउट हो रहा है तो माइग्रेशन होगा। इनफैक्ट मैं जब पढ़ रहा था मैं पीएचडी कर रहा था, तो अपने एरिया में मैं माइग्रेशन को पहले पढ़ा कि वहां से छोटनागपुर जो झारखंड रीजन है उस पर मैं पीएचडी किया हूँ, तो वहां से बहुत लोग माइग्रेट करके बाहर असम, कलकत्ता, बिहार तो नहीं, कोल फील्ड, इस तरह जब माइग्रेट करते थे, तो मैं उसको उनका क्या पैटर्न था वो माइग्रेशन का, और उसके साथ क्या दूसरे पैटर्न के साथ क्या कोरिलेशन है, मैं ये देखा। प्रीति जो पूछ रही थी कैसे कोरिलेशन को कॉजेशन, और वहां मुझे अजीब सा मिला कि देखा मैं कि मैं सोच रहा था कि जब कम बारिश होगी, बहुत कम एवरेज बारिश कम होगी तो माइग्रेशन ज्यादा होगा। ड्राउट के टाइम होता था, but it was not dependent on the absolute rainfall. Absolute amount of rainfall was not linked to high or low migration. What was linked to was the distribution of the rainfall. मैं देखा कि अक्टूबर का महीना का रेनफॉल सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता था माइग्रेशन। अगर अक्टूबर का महीना, जिसको हमारे बिहार और झारखंड में और उड़ीसा में भी उसको हम कहते हैं हत्या हस्त नक्षत्र के टाइम में जो रेन होता है, दैट्स क्वाइट क्रूशियल फॉर राइस कल्टिवेशन। तो मुझे वहां से पता चला कि राइस इज द मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर माइग्रेशन। जो लोग राइस नहीं करते थे, राइस कल्टिवेट नहीं करते थे, वो माइग्रेट नहीं कर रहे थे। सो दैट बाय फर्स्ट फाइंडिंग अ प्रॉब्लम ऑन एक्सप्लेनेशन, I found another set of facts which had to be created or had to be utilized to explain this same phenomenon. कि ये it was caused by those who had adopted rice, and those who had not adopted rice were still doing their oldest type of say millet cultivation. They were not migrating, and so these some things you have a wrong answer, but when you have an unexpected answer, ये तो होना चाहिए, नहीं हुआ, that can lead you to find different set of facts to explain this phenomenon. There are so many other ways we do it, and but that's how we do history, I suppose. All historians, whether ancient, medieval, we all do it. We use something, then it doesn't work, then we find another. जैसे वो Captain Grant के बच्चे, Captain Grant's children looking for their father were using different configuration to fit, and then it doesn't work. Thankfully बाद में मिल गए Captain Grant. हमें भी कभी कभी मिलते हैं कैप्टन ग्रांट, बट कभी कभी नहीं मिलते हैं हमें। Now I request Abhishek to give the vote of thanks. Thank you, Lakshmi sir. प्रभु सर तो सीधा वोट ऑफ थैंक्स कहना ही बहुत हो जाएगा, क्योंकि वो शायद मुझे लगता है इसी में खुश होंगे, क्योंकि जो उनकी लोकप्रियता है और उनके बारे में जो उनके सहयोगी डिपार्टमेंट में कहते हैं कि प्रभु तो प्रभु हैं, और जब छात्र जूझते हैं तो वो कहते हैं कि चलो कोई नहीं है तो प्रभु से बात करते हैं। तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। हाँ, हालांकि इतिहास को तलाशने और इतिहास की शिल्पता पर बात करना और तथ्यों में निहित अर्थों को तलाशना, जिस पर आबी सर ने अपना व्याख्यान दिया, वो आज के दौर में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आवश्यक है। नए छात्रों को, जो छात्रों की नई पौध आई है उनके लिए भी, और जो हम जैसे लोग सीख रहे हैं या जो लोग स्थापित हैं उन सब के लिए भी, क्योंकि आज इतिहास को जैसे तोड़ मड़ोड़ कर एक अतिशयता का माहौल बना दिया गया है कि हम कुछ भी लिख दे रहे हैं और कुछ भी बोल दे रहे हैं। ऐसे में तथ्यों में निहित अर्थों को जानना, और जिसकी बातें अभी पिछले 2 घंटों में सर ने की, तो मुझे लगता है कि ये उन बच्चों को और उन सभी लोगों को एक ऐसे संक्रमण से निकलने, सकारात्मक रूप से बाहर निकलने में मदद करेंगी, जिसमें लोग उलझे हुए हैं कि फैक्ट को तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है और क्या वास्तविक इतिहास है उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो इस संदर्भ में तथ्य और उसमें निहित अर्थों को जानना और इस गुणिक व्याख्यान से सीखना, मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है, जिस पर सर ने बात की। और सीधे तौर पर मुझे लगता है जैसी इनकी सादगी और जितना मैं सर को जानता हूं कि अगर हम इनके बातों से कुछ सीखें तो वही शायद इनके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद होगा और उसी में शायद इनको सबसे ज्यादा खुशी होगी। लेकिन कुछ उपमाओं के साथ और कुछ प्रतिमानों के साथ कहते हैं कि एक लोकप्रिय इतिहासकार की व्याख्या, तो मैं कहूंगा कि इतिहास के यात्री अर्थात नागार्जुन हैं आप, इतिहास के चीवर अर्थात रांगे राघव हैं आप इतिहासकार, इतिहासवेत्ता हैं। कोटि कोटि धन्यवाद आपको हमारा है।
थैंक यू भाई, और लंबा ना पढ़ना। थैंक यू सो मच सर। बहुत लंबा पढ़ सकता है मैंने। थैंक यू सो मच सर। वेल डन। कुछ और फॉर्मल थैंक यू प्रिंसिपल सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमेशा हम सबको इनकरेज किया कि हम अच्छा सुने, अच्छा सीखें और अच्छे प्रोग्राम्स के साथ आगे बढ़ें। अश्विनी सर जिन्होंने हर पल एक नए उत्साह के साथ हर एक प्रोग्राम के लिए हम सभी सहयोगियों को प्रोत्साहित किया और हर पल चाहा कि हमारा डिपार्टमेंट एक बेहतर रूप में आ गया है और एक मिसाल के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय में उभर कर आए और हम अच्छे अच्छे स्कॉलर्स को बुलाकर अपने प्लेटफॉर्म पे सुन पाए। तो उनके हर उत्साह और हर उत्साहवर्धन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सहयोगियों का यहाँ बहुत लोग हमारे सहयोगी जुड़े हैं और शायद पुराने प्रोफेसर राणा बहल भी यहाँ हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। SM झा सर हमेशा बहुत ही एक्टिव रहे हैं ऐसे मंचों पर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तमाम हम सब युवा सहयोगी हैं, उन सबका नाम लेने से बेहतर है कि सबको एक साथ धन्यवाद कहूँ। हाँ, एक धन्यवाद जरूर कहूंगा कि जो बच्चे ओरिजिन की टीम के लिए काम कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम आपकी टीम के बिना सफल नहीं होता और वो बच्चों की जो जागरूकता है और बच्चों की जो सीखने की ललक है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा धन्यवाद के हकदार वो हैं। हाँ, जिन्होंने ज्वाइन किया उनको सबसे ज्यादा धन्यवाद कहना इसलिए जरूरी होगा ताकि वो वॉइस ऑफ डिसेंट बन के न रह जाए, वो सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ें और एक सकारात्मक समाज के निर्माण में योगदान दें और इतिहास की इस नई संक्रमण के नकारात्मक संक्रमण छाया हुआ इसको हटाएं। तो आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। सर को एक बार फिर से धन्यवाद। Thank you very much, and I think Ashwini and Abhishek, of course, Abhishek is a student. Prabhu, yeah. I would request my colleagues to switch on their camera for a photograph session. Sir is saying something with you. And I also wanted to make an important announcement that in this webinar series, we are going to have the next lecture by Professor Aditya Mukherjee on Jawaharlal Nehru and the making of modern India on 19th at 11:30. So I would request all the students and colleagues to join that talk also. We'll be sharing the link shortly, maybe in a day or two. Now let's switch on our camera for a photograph session with the speaker. Thank you so much, Ashwini. Thank you very much. And now I can be less formal and say thank you so much. I was a bit reluctant to, when you pushed me, but I think it was interesting to have talked to you. And I also thank your principal. I don't see him though. This it's a really interesting, and I really admire the way you have brought in historical. तीनों लेक्चर मेरा तो मैं जानता नहीं, but दो लेक्चर तो बहुत अच्छे हुए और सब. I wish you all the best for all the lectures, and I would be, whatever little I can do, I would try and join and be part of the thing also. Thank you, Ashwini. Thank you, Abhishek. Thank you, Vikas. 1 second, प्रभु एक फोटोग्राफ लेना है. विकास फोटोग्राफ लो भाई. हो गया सर, हो गया. Okay, thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Prabhu, once again. Vikas. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, Vikas. Thank you, sir. Thank you. Sir, should I end the meeting? Yes. Thank you.